Hi everyone, very good morning. This is Sunday, beautiful morning. Ashish Kyal this side. Very warm welcome to all of you. And I just want to know कि आप मुझे सुन पा रहे, देख पा रहे, if I'm audible and you are able to understand what I'm talking. And very warm welcome. Chaitanya, great to see you after some time. Praveen, Shubhada, Saurabh, all of you are very Prabir Sil, Gaurav, Anand, Kiran Naik, Jai Shri Krishna, Bhagiraj, great to see you also again here, Santosh. So every one of you, it's fantastic to see all of you over here. Very warm welcome, Priscilla, Neeraj, Harbinder. So many of you have joined in today. Fantastic. So we have been in a marathon of conducting this kind of webinars where we want to spread across the knowledge of trading the market in a very systematic fashion, and that is what we are trying to do here. So in next 2 hours, we are going to look at a very important aspect of candlestick. We will be looking along with that Elliott waves. We are not going to get into the rules of Elliott wave, but what is Elliott wave as such? We will see that. And then along with that, we are going to move forward to look at time concepts. And we will apply these techniques together. ये सारी टेक्निक्स को साथ में अप्लाई करेंगे एंड देखेंगे कि मार्केट में आने वाले वीक में आने वाले मंथ में क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है और कैसे ऑप्शंस में ट्रेड ले सकते हैं. So I am going to do all of those things, which is very important, and it is fantastic to see so many of you are here with me, giving your time and giving your energy on this Sunday morning. Wishing you all a very happy Friendship Day as well. Today is a Friendship Day, and I can see my son and all over the place, his friends visiting, and all of those planning is going on. It's fantastic, and I'm spending my time with you all. So I'm really glad that you all made it here because आपको कुछ करना है different. So ये 2 घंटे आपके लिए है. Also ensure that in these 2 hours you are not going to be, right now please put your phones on silent. These 2 hours have to be for your own self. Okay, so no WhatsApping anymore right now. बीच में करना होगा, मैं आपको बताऊंगा कब करना है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आपको फोन साइड में रखना है. I know it's a friendship day, but you want to disconnect for some 2 hours, not much, just 2 घंटे के लिए. And what is also going to be important is in these 2 hours, we are going to see certain techniques जो आप combine करके कल से apply कर सकते हैं, and you can see a huge change in your trading strategy. You can see a change in your perception about the markets. So this 2 hours is going to be an eye opener. We are going to have this session until 1:15. So please ensure that you are here with me until 1:15. And साथ में एक और चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, this is for you all. Okay, I am going to give certain trade setup, certain strategy जो जाके आप apply कर सकते हैं. Before I move on, many of you might want to know that who I am. My name is Ashish Kyal. I'm a chartered market technician, cleared all 3 levels in 1 year in 2008. I worked with Lehman Brothers that filed for bankruptcy in 2008. Then I joined Nomura, and huge change in the culture from US to Japanese bank. Then I was also working with National Stock Exchange. I was working with National Commodity Exchange, and I have authored a book, Effective Trading in Financial Markets Using Technical Analysis. That's the book that I have authored, worldwide available. This book is for $9.95 only, and it's available worldwide across, and being endorsed by who's who of technical analysis, including Robert Proctor himself. So that's the book I'm talking about. And I have been in the market for nearly 15 years, and I know what works in the market. So the company which I found is Wave Strategy Advisors. You can see me on various business channels. I'll share across my PPT also. I have won consecutive 3 times. I have won on CNBC Awaaz. Last week भी CNBC Awaaz पे खिलाड़ी number 1 में I was there, and I clocked in nearly 15% return. एक हफ्ते के अंदर 15% return. So something is working in the market, that is for sure. And that's technique I am going to share it across with each one of you who are here giving your time to me. So just stay back, stay tight, and we are going to start our journey, which is going to be phenomenal from here on. 2 घंटे में काफी कुछ आप सीखेंगे, लेकिन उसके पहले let me take a very quick poll here with you all, and I want to know, is this your first webinar with AKTG?
AKTG is Ashish Kyal Trading Gurukul, which is a learning series by wavesstrategy.com. So AKTG, क्या ये आपका पहला webinar है? So I'm just sharing it across over here, the poll, and there are people who are there on YouTube. If you want to join me on this platform of Zoom and want to be a participating in this kind of interaction on on the Zoom platform, it's available. So you can simply join me here. I've shared across the link. So join me here. And I want to know before we can proceed. I can see so many of you are here for the very first time. And before we can proceed, I would like to know from you all, how is the Josh today? How is the enthusiasm today to learn? Is the Josh high? If you are in a very high mood, and market में क्या हो रहा है वो देखना है. लास्ट 4 दिन में तो कुछ हुआ नहीं, रेंज में अटका हुआ है, एंड आधे लोग बुलिश है, आधे लग रहा है कि ओवरबॉट है तो नीचे आएगा. But the Josh should not come down. The Josh should always remain high. That is very, very important. So I'm ending the poll very quickly. And let me now ask one more thing over here, that what are you an options trader? Because हम बहुत सारे examples लेंगे options में से. We will see option buying कैसे की जा सकती है, option selling कैसे की जा सकती है. We will take those examples. But before that, I want to know, are there are people who are trading in options? Okay, I can see so many of you are here who are trading options. Wow, that is amazing. So many of you are into the options trading. That's fantastic. Great. Over here. And I'm going to end this poll right away because we want to move forward, right? Great. So हम देखेंगे examples लेंगे options में से. Let me open up my PPT now and share it across with each one of you, which is over here. Just a second. Okay, are you able to see my PPT now? And I'm going to hide myself from here. And क्या आप देख पा रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा time नहीं spend करके. So Wave Strategy Advisors, we are an independent research company. We provide research in equity, commodity, forex market, as I said. And you can see me on various business channels. Monday ko I'm going to be on CNBC TV 18 at around 1:30 in the afternoon. So you can see me last entire week. I was there on CNBC AWA, CNBC TV 18, Economic Times, Market, and a lot of those places. We provide research across using basic and the most advanced part of wave theory. Ashish Kyal Trading Gurukul is the name, which is for educating millions of you. So now why I am doing this? The bottom line is there have been times when Lehman went bankrupt, I lost my job. I don't know what to do, how to go about it. And I know how challenging it became. So I decided कि यार कुछ तो parallel income होनी चाहिए, because I don't want to be dependent on job. कोई security नहीं है. Same thing in COVID, many people would have faced, right? That's why I started looking at market, started trading, looking at a lot of things, started my own firm, and काफी कुछ किया है. And you can see this is CNBC Awaaz Khiladi number 1, which where I won. In fact, I'll share across. These are the 4 times out of 5 shows. 4 times I won Khiladi number 1. You can clearly see with huge margin, 17%, 20%. You can see that 11% in just 1 week of time without leverage. I also have played for Bullseye trade show. एक जमाना था जब Bullseye आता था CNBC पे, वो भी किया. साथ में you can clearly see on Economic Times also ET and various places. चलिए आगे बढ़ते हैं. I've been speaking at IIM's National Stock Exchange, CNBC TV 18 already I said, and I'm also writing for Economic Times section of Navbharat Times. You can see me with my mentor. Here is Martin Pring, Ralpha Kampora, and other mentors. So this is the book I talked about, which is available on wavestrategy.com/book. And this is amazing. I mean, it is being endorsed by Robert Proctor, Ernest Pichen, Mr. Mahalingam, and all of those things. These are all the happy faces from various programs we conducted. I'm also speaking at China. I spoke in January. There were more than 3,000 participants. I was selected as by China for the Hall of Fame. Yeah, so that's what I was selected for, and it was simply awesome. So they are inviting me again.
तो सोचो ना, ऐसी जो टेक्निक जो चाइना में more than 3000 people are attending to Elliott wave and time cycle. Why don't you want to learn this technique? It is simply fabulous. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. This is the Twitter handle. Ensure you are following me on the Twitter, and you will be able to get some bonus videos. That is for sure. SEBI registered, we are SEBI registered research analyst. Just a disclaimer. Our Ashish Kyal Trading Gurukul Telegram group is this Telegram channel. Ensure you are following the correct Telegram channel, because there are fake channels also. Do not follow those fake channels in my name. सोचने वाली बात यह है कि वो मेरा नाम भी यूज कर रहे, साथ में मेरी फोटो भी यूज कर रहे. And the only biggest difference is they will never disclose a phone number. So in my Telegram channel there is a phone number clearly mentioned. So ensure you are following me on that phone number mentioned होगा, आप वो follow करिए. And इधर लिखा भी है description में भी SEBI registered research analyst. बाकी बहुत सारे fake channels है, you can't really do that. Don't fall into that prey. They will say overnight double हो जाएगा पैसा. ऐसा नहीं होता. ओवरनाइट डबल करने के लिए अगर आप इधर हो, तो मैं अभी बता रहा हूं कि ओवरनाइट डबल नहीं हो सकता है. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट वेरी वेरी क्लियरली. और यहाँ पर बहुत पैसा कमाया जा सकता है मार्केट से, लेकिन रिस्क भी समझना होगा. रिस्क है तो इश्क है, बराबर ना. सो रिस्क तो समझना होगा, लेकिन पैसा भी कमाया जा सकता है. चलिए आगे बढ़ते हैं. ये एक चार्ट हमने किया था वेबिनार. आर यू देयर एनी पीपल हु वर अ पार्ट ऑफ दिस webinar where I have predicted Bank Nifty ka turning date and time, which was 10:45. Okay, I can see Mr. Sharma was here at that point. Shalini, yes, I remember you. Kiran was there. Baba was there. Okay, great to see so many of you, and many more were there. So यहाँ पर हमने क्या predict किया था? That Prabhar Sil was there. Neeraj, great. यहां पर प्रेडिक्ट किया था कि 10:45 AM को 25 जुलाई को ऑस्पिशियस टाइम है, बैंक निफ्टी ऊपर जाना चाहिए, देन इट विल कम डाउन एंड देन इट शुड अगेन गो अप ऑन 27th at 9:30. नाउ लेट्स कम टू द लेटेस्ट चार्ट एंड चेक. लेट्स कम टू द लेटेस्ट चार्ट एंड चेक. एंड यहां पर अगर आप देखेंगे, दिस इज बैंक निफ्टी लेटेस्ट चार्ट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. और जो हमने मार्किंग की थी वो कहां की थी? यहां पर थी वो मार्किंग. जस्ट सिंपली सी दैट, एंड दिस वाज द लेवल, एंड दिस इज एग्जैक्टली ऑन द टाइम दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. इट्स वर्किंग फैबुलस. यहां पर भी अगर आप देखो तो लो बना, रैलीड, यहां से रैली, यहां पर लो बन के रैली, एंड यहां पर फॉल ही नहीं आया तो इन्वर्जन हुआ. सो नेक्स्ट लो बैंक निफ्टी पे, दिस इज द कॉन्सेप्ट विच वी कॉल एज टाइम साइकिल. दिस इज द पीरियड बिटवीन 45 पीरियड. ये निफ्टी का 15, निफ्टी बैंक का 15 मिनट का चार्ट है. ओके, दिस इज 45 पीरियड, मतलब ये लो के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज 45 पीरियड. ओके, नाउ दिस इज अमेजिंग वे ऑफ लुकिंग एट द मार्केट. सो टाइम साइकिल वर्क्स लाइक मैजिक. You can actually forecast. You know, forecast का मतलब है predict कर सकते हो the exact time when market will reverse back. You know, you can do that very very clearly. This is Bank Nifty, and you have to understand very clearly that by looking at this, we need a move on the downside and then a push. So by looking at this chart, what we can make out is, over here we should see a push on the downside, and then we should start seeing some kind of a upward movement. We will look at this chart again later. Okay, हम साथ में देखेंगे कौन सा एग्जैक्ट टाइम फ्रेम है, कब होने वाला है, वो सब हम देखेंगे. दिस इज बैंक निफ्टी. So we can actually predict, and that's how what I have been doing. You know, to win these shows on international channels, on media, you need some very strong techniques, and that is what I have been discussing. So I'm going to be looking at this
we are also going to be looking at very important way of seeing the market like never before. Is it clear everyone? So यहाँ पर ये हम apply करेंगे थोड़े time में. So what all things we are going to do, I'm again going to repeat. We will start with candlestick. Post that we are going to be looking at, along with candlestick, we are going to be looking at clearly the concept of Elliott wave. क्या होता है 5 step forward, 3 step backward, and then we will be combining with time. Okay, and let's just move on from here. यहाँ से आगे बढ़ते हैं. Let me just do that, just a second. Okay, and यहाँ पर now in the last webinar we have discussed how the bank nifty is going to behave, and look at the chart how bank nifty is going to behave. हमने बात की थी Elliott wave के पर्सपेक्टिव से. बैंक निफ्टी ऑलरेडी अराउंड 38,000 है. यहाँ पर था जब वो बैंक निफ्टी हमने डिस्कस किया था कि यहाँ से एक हाई बनेगा एंड देन वी शुड स्टार्ट सीइंग अ डाउनवर्ड प्रेशर किकिंग इन. तो वो है Elliott wave. तो उसके बारे में बात करेंगे. चलिए पहले आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एकदम सिंपल फैशन में, इन अ वेरी सिंपल वे, हाउ टू लुक एट कैंडल्स एंड हाउ टू लुक एट वेरी इंपॉर्टेंट वे ऑफ कैचिंग रिवर्सल. क्योंकि अगर आप ऑप्शन बाय करना चाहते हो तो रिवर्सल कैच करके ट्रेड करने में सबसे ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बनता है और कैच करके आप पैसा कमा सकते हो उसमें. नाउ इफ यू आर लुकिंग एट दिस, लेट मी एक्सप्लेन यू अ सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ candle first. People who have been a part of these webinars earlier might already know this, but let me repeat it again. What is that concept? See, this is a candle. We call this as a candle. This is the open and close. This is high on the upside and low. Okay. Now the trend will remain on the upside. The trend will remain on the upside until we see a lower high and a lower low formation. So जब तक lower high lower low formation नहीं होगा, trend will remain on the upside. So this is the high, this is the high, ये low है, ये low है. Now this is a simple concept of Dow theory. Very simple concept of Dow theory, where we are expecting that this high is below the prior high, this low is below the prior low. That's a lower high lower low formation that we see on the chart. This lower high lower low formation clearly, so this high is below the prior high, this low is below the prior low, which indicates that the trend is turning from upside to downside. Is it clear? इसके साथ में एक और कंडीशन चाहिए हमें. The close here should be below the prior low. So तीन कंडीशन चाहिए for us to confirm that the trend has changed. What are those three conditions? The conditions are the high of this candle should be below the previous high, the low of the candle should be below the previous low, and the close has to be below the previous low. Once these three conditions are satisfied, we can say that the trend which was upside has changed to downside. So these three conditions are very important for anyone to trade the market in a very prudent way. Okay, very clearly. Any questions on these three conditions? क्योंकि इसके ऊपर पूरा का पूरा आगे का एनालिसिस बेस्ड है हमारा. This is very important, very crucial. You can apply this on 10-minute chart, 5-minute, 1 hour. You can apply it on any time frame. Any time frame. Intraday के लिए या commodity पे you can apply on any different time frame. So what we want to now do is, if you, I'll again repeat. I'll repeat as per the chart here. Okay, let me show you on the screen here. This candle, try and understand. This candle, can I say this candle high? ये candle का high previous high के नीचे है. The high of this candle is below the prior high. Okay. The low of this candle is below the low of prior low. Okay. And the close of the candle is also lower. So ये तीनों condition satisfy हुआ as per this
which means the trend has now changed to down until we see a higher high, higher low. Similarly, ये candle आप देखो, भले ही red candle है, even if it is a red candle, if you check here, this is weekly chart of Nifty, this is 1 week chart of Nifty. We will practically go on the daily chart, Anand, and we are going to see that later. This is a weekly chart of Nifty. If you look at the weekly chart of Nifty, can I say that this high is above prior high, this low is above prior low, and the close here is above prior high? All three conditions satisfied here, which means that case you might have to go long. So this level is 15,800 around. वहां से, do you see a single condition not satisfied here up till now? When we will get a reversal, three condition is must. All three condition is must. दो condition नहीं चलेगा. The reversal will happen once we see this happening. Okay? तो मंडे के लिए या आने वाले वीक के लिए ये देखना होगा, ये लो इंपॉर्टेंट है. ये लो कौन सा है मालूम है आपको? 17,154. And if you have been looking at my tweets and various places, you might realize that this is the most important level that I have been talking for quite some time. And this level was created because of the event of China and Taiwan. उस दिन न्यूज आया थर्सडे को एंड निफ्टी ने लो बनाया चाइना टाइवान न्यूज के दिन 17,154. तो जो इवेंट के डे पे लो बनता है ना, इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इज इट क्लियर? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस क्लियरली. सो चाइना टाइवान मार्केट को मूव कर रहा है या मार्केट वही कर रहा है जो उसे करना है? ओके, और इज इट टेक्निकल studies that is moving the market? Try and think. Try and think. So these three conditions are most important. Despite of the news, खाली एक spike आया. After the spike, the market again went up. Nothing changed because of the news. Imagine. So it is not the China Taiwan news that is moving the market, or it is the study, the technical study on the chart that is moving the market. The three conditions on candlestick can simply change the way you trade. It is important. Okay. Now what is crucial is for you to understand if this condition was looked at this point of time. यहां पर अगर आप देखोगे, from here, this is the level around say 14,500 के आसपास. This works on across time frame. I will come to that. I am going to do that. 14,500 say, if you look at this entire technique, the entire move went on the upside until here. So this is the level which is around 17,400 से भी ऊपर 17,500. So from 14,500 approximately, I'm saying not exactly, from 14,500 till 17,500, not a single candle. 3,000 points rise on Nifty. Look at it, एक भी candle previous low के नीचे बंद नहीं हुआ है. Not a single candle has closed. So if you are trading into 4 lots, I take that example because approximately if you are trading into 4 lots, by looking at this simple technique, you would have ended up making in just less than, I think this is less than 20 trading sessions. You would have increased your capital by 6 lakh. This is on a weekly time frame. And it works like amazing. Look at this trend here. Look at the trend here. Look at the trend here. Every time there is a trend, this is how it works. Is it clear? So खाली candlestick को अगर आप देखोगे और trade करोगे, you will be able to understand it works amazing. This is weekly. I'm going to show you on a practical chart on the daily time frame also. ठीक है? Now can I say
looking at this entire chart, can I also say that the market right now is nearing this channel resistance from where it has reversed multiple times? Can I say that the market is nearing the channel resistance here from where it has reversed multiple times? Are you understanding this? So is there a possibility कि यहाँ पर something can change? Why? Because we are nearing that level. This is the resistance level. This is the resistance level. यहाँ पर मंदी करने वाले लोग बैठे हुए, ये सपोर्ट है नीचे, यहाँ तेजी करने के लिए लोग बैठे हुए. So मैं ये नहीं कह रहा कि मंडे से रिवर्स होगा. What I am saying is ओवरऑल 17,500 17,600 यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लेवल बन के आया है ऊपर में. So if we see a reversal here, can I say we'll get a classic opportunity back to the downside if we see a reversal? समझ में आया? सिंपल कैंडलस्टिक टेक्निक है. 3 कंडीशंस के बेसिस पे हमने ये कैंडलस्टिक टेक्निक को बनाया है. ओके, is it clear? So you have to understand कि इस टेक्निक को अभी शॉर्ट टर्म में कैसे अप्लाई कर सकते हैं हम. डेली टाइम फ्रेम पे, आवरली टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे. shall we go and apply this technique? Very clearly. चलिए. So this is the secret sauce. You know, I have worked with big people. I have worked with hedge funds. I have worked with, you know, I was in US, I was in UK. This techniques जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये big players use करते. My intention is to bring down these techniques to every single one of you. Every single one of you should be able to now use this technique, not lose money, increase your accuracy, make money out of the market. That is my aim, because I know the pain when we lose money. एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार जब लॉस होता है ना, तो ट्रेडर का माइंडसेट होता है, यार मैं लाइफ में कर क्या रहा हूं. That is what we look at, right? That what are we trying to do in life because of this so much of losses. But अगर हमें पता है कि यार टेक्निक चलेगा, then we have to clearly understand and apply this technique properly. So चलते हैं चार्ट पे. मैं प्रैक्टिकल चार्ट अभी ओपन कर रहा हूं. Meanwhile, now you have the opportunity to invite your friends, family members or anyone who wants to look at it. तो इसके साथ में जब हम Elliott wave combine करेंगे, that will be the lethal combination. So we will club this along with Elliott wave. Okay, टाइम के साथ में भी कंबाइन करेंगे. So ensure you are inviting your friends. Okay, Kiran Naik, you have been very quick on doing that. Already invited. I can see Sudipto has already invited 10 of his friends. टाइम साइकिल भी प्लॉट करेंगे, बैंक निफ्टी पे करेंगे स्टेप बाय स्टेप. हैव पेशेंस. सो लेट मी जस्ट ओपन अप माय chart here. Everyone is aware about trading view. Do you want to see a practical chart right now? How do we do it on the chart? How do we look at this candle? डेली पे क्या है, 5 मिनट के चार्ट पे कैसे ट्रेड करना है, कैसे बैंक निफ्टी को देखना है. चले चार्ट के ऊपर. So meanwhile, don't you want to invite your friends and family members जब तक मैं ओपन कर रहा हूं. So I'm just sharing the link. I've shared the link already. So ask your friends and everyone to be a part of this wonderful journey. And just here is the link. Ask them to join. Click on that link. You will open up a page. वहां से copy paste करके आपको share करना है, so that they can also learn along with you. So meanwhile, let me open up the chart. Okay, Jigar is very eager. I can see Bhushan and Mahesh has already invited on many Telegram groups. Wow, Mahesh, I can see that there is a sharp rise in the people joining in now. I think do that. Sudipto is saying I'm your Jabra fan. Thanks for that. I'm opening up the chart, by the way, right now. Just give me a second. Shalini has invited his her brother. Great. I look like Bhushan, but I'm not. I'm sorry. I'm not a fan of anyone. I don't know who is Bhushan, but to be very honest. So let me just move on further and let me share across the chart. Meanwhile, keep inviting, keep them glued.
let them be life changing. See, this 2 hours is life transformation. It will change the way you ever see the market. That is my commitment. So invite anyone who wants to be transforming their life for good. Okay, not only in stock market but everything that you do. Okay, let me now share my screen here. Over here now I am going to go and okay, Bhushan Bhatt is Harshad Mehta's partner. Okay, I'm going to come here and overall I am going to show you a nifty chart. पहले चलेंगे निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम पे, फिर देखेंगे बाकी सब चीजों के बारे में. आई एम गोइंग टू हाइड अक्रॉस एवरीथिंग. सिंपल सा चार्ट देखना है एंड यू विल बी वंडरिंग. आई एम टेलिंग यू कि अगर ये टेक्निक पहले से पता होती तो क्या मजा आता मार्केट में ट्रेड करने के लिए. यू नो दैट्स व्हाट माय मेंटी सेज, दैट इट इज फन टू ट्रेड द मार्केट नाउ, नॉट एंजाइटी, इट इज फन टू ट्रेड. तो चलते हैं मार्केट में, देखते हैं कि क्या हो रहा है, कैसे हमें यहाँ पर ट्रेड देखना है. सो लुक एट दिस चार्ट. सपोज इफ वी स्टार्ट अवर एनालिसिस फ्रॉम हियर, कहीं से भी एक पॉइंट पे ले लो. कैन आई से दिस इज द एरिया आफ्टर द लोअर हाई लोअर लो क्लोज, वी अगेन वेंट अ हायर हाई एंड अ हायर लो क्लोज इन दिस कैंडल. वी कैन सी यहां पर क्लोज हो गया. फ्रॉम दिस पॉइंट can you see a single candle which is closing below the prior low? Single candle until here. Tuhin has already shared across. Fantastic, Tuhin. Thanks for doing that. So yahan se kaun sa level hai? Try and understand what I'm trying to say. The three conditions which we talked about. From around 15,400 levels until around 16,000, which is 600 points on the upside, we have not seen. See, despite of the spike here, the close did not happen below the prior candle low. Despite of the spike के बावजूद भी close prior candle low के नीचे बंद नहीं हुआ. Okay, so 600 points on Nifty. From here again, do you agree with me that the trend has changed back to upside? Around 16,200 level के आसपास the trend has changed back to upside until around this candle. Okay, from here can I say the trend has changed back to upside? What we have to understand very clearly, can I say that the overall trend has changed from around 16,800 levels say on the upside without a single candle closing below prior candle low? Without a single candle closing below the prior candle low. मतलब 16,800 से 17,400 आ गया निफ्टी, लेकिन एक भी बार क्लोज प्रीवियस कैंडल लो के नीचे नहीं हुआ है. नाउ जस्ट थिंक फ्रॉम 16,800, ओके, यहां पर वी वेंट टुवर्ड 17,400 लेवल्स. ये दिख रहा है आपको यहाँ पे 17,400. So if you look at this 600 points on Nifty again, 600 points on Nifty that we are seeing, not a single candle has closed. If you have been trading for this 600 points and अभी भी running है, अभी close हुआ नहीं है, and you have been trading again say 4 lots, you will end up making 1,20,000. What is your stop loss? That is what the question is. कि भाई समझ में तो आया कि ये टेक्निक चलता है, लेकिन ये टेक्निक को हम अकेले नहीं यूज करेंगे. दिस टेक्निक हैज टू बी कंबाइंड विद टाइम और एलियट फिर दोनों के साथ कंबाइन करेंगे. यू कांट रियली, यू डोंट रियली यूज दिस इन अलोन, लेकिन इट वर्क्स लाइक मैजिक. आई एम टेलिंग यू. सो इफ यू लुक एट दिस चार्ट, यहां पर वी गॉट अ लोअर हाई लोअर लो. Okay, this level was 16,500. Just look at it. I'm again repeating. Lower high, three conditions, guys. Lower high, lower low, and close below prior low. Lower high, close below prior low हुआ,
लोअर हाई एंड लोअर लो हुआ, दिस इज 16,500 के ऊपर, 16,500 अज्यूम करते हैं हम, 16,550 है। फ्रॉम हियर लुक एट इट, एक भी कैंडल अंटिल दिस पॉइंट डिड नॉट क्लोज, अंटिल दिस पॉइंट। अगर आपने 15,600 पे भी या 15,550 पे भी एग्जिट किया होगा, कितना पॉइंट्स बना? हाउ मेनी पॉइंट्स वर यू एबल टू मेक? 1,000 पॉइंट्स। ओके, एंड दैट्स ब्रिलियंट, राइट? 1,000 पॉइंट्स यू आर एबल टू गेट ऑन निफ्टी। इमेजिन आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? आई एम नाउ गोइंग टू रिपीट दिस, प्लीज फोकस हियर नाउ very closely. What is your stop loss going to be? Your stop is going to be prior day का high plus वहां से लीवे देंगे हम approximately you have to give that leeway. अगर आप डेली चार्ट देख रहे 30 पॉइंट्स, 20 to 30 पॉइंट्स का लीवे देना है. By default let's assume that we are giving a leeway of approximately 30 points. So मेरा stop loss क्या है? Prior candle high plus 30 points. So at this point of time, what is my stop loss? This candle high is 16,793 plus 30 points. So 16,823 का stop loss हो गया. So my stop loss is going to be 16,000. This is a 823. Remember, this is a daily chart, इसलिए stop loss भी बड़ा है. So around 250 points का stop loss है. 250 points का है ना? कितने points का है? क्लियर है? 16,550 पे अगर आप ट्रेड कर रहे हो, माइनस 16,823 का स्टॉप लॉस लगा है, 270 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस था. सो 270 पॉइंट्स के सामने आपको कितना मिला? 1,000 पॉइंट्स. व्हाट इज योर रिस्क रिवॉर्ड? अप्रोक्सीमेटली 1:4. रिस्क कितना है? आपका रिवॉर्ड कितना है? So can I say the risk reward which I got is 1:4? Do you agree with me? See, people, I don't want you to just simply follow what I am saying. I want you to understand it. The stop loss will change daily. Yes, you have to every day change the stop loss. Okay. So 1:4 का risk reward है. इसका मतलब क्या हुआ? अगर मेरा लाइफ में एक्यूरेसी 50% भी है, मतलब 50 बार मैं लूज करूंगा, 50 times I'll make money. Can I say that I still can make a lot of money? What I am trying to tell you is, if my risk reward is 1:4, समझ में आया कि जब लॉस हुआ तो 270 पॉइंट, जब प्रॉफिट हुआ तो 1000 पॉइंट का हुआ. लेकिन अगर ऐसा मैंने 50 बार भी किया और 50 बार लॉस किया, कैन आई से दैट आई कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी 50% एक्यूरेसी पे? क्यों? क्योंकि अगर 50 बार भी नुकसान किया तो 200 रुपया गया, और 50 बार प्रॉफिट किया तो 1000 रुपया. तो मतलब नेट नेट तो पैसा बनेगा. वाह. तो आज तक तो हम सोचते थे कि अगर एक्यूरेसी 70% होगा तो ही पैसा बनता है. आज किसी ने पहली बार बताया होगा दैट इवन इफ योर एक्यूरेसी इज 50% यू कैन स्टिल मेक मनी. डू यू एग्री? एवरी डे स्टॉप लॉस कैसे ट्रेल होगा? प्रीवियस डे का हाई देखना है, उससे 30 पॉइंट्स प्लस रखना है, वो स्टॉप लॉस लगा देना है सिस्टम में. कभी कभी ट्रिगर भी हो जाए. अभी समझो हम यहाँ पर लॉन्ग गए, यहाँ पर हमें देखना है प्रीवियस डे का लो क्या है, इससे 30 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस लगा के रख देना. अभी मंडे के लिए स्टॉप क्या होगा? मंडे के लिए फ्राइडे का जो लो था उससे 30 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस लगा दिया. आइडियली तो क्लोज होना चाहिए. सी, आइडियली क्लोज, लेकिन मालूम चला बड़ा क्रैश आ गया, क्लोज के चक्कर में एंड ऑफ द डे तक 400 पॉइंट निफ्टी नीचे है, तो रिस्क बहुत हो जाएगा. इसलिए ये डेली चार्ट पे है. And I'm sure many of you might not be using this bigger time frame. तो चलते हैं अभी शॉर्ट टर्म 1 hour चार्ट पे. 1 hour चार्ट पे चल के you will see the fun of trading now. Look at this. ठीक है, यहां पर can I say the trend has changed? I want you to now interact people in, because तो मुझे समझेगा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं. ये मंडे से हमें चेंज करना है अपना ट्रेडिंग स्टाइल. So यहाँ पर can I say that over here at this point of time ये 16,550 का लेवल है.
16,550, यहां पर मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा? ये लो, व्हाट इज द लो? -20 पॉइंट्स। ये अवरली चार्ट पे इसलिए 20 पॉइंट्स या 30 पॉइंट्स लेंगे हम। देखते हैं, ये लो है 16,438। सो कैन आई प्लेस माई स्टॉप लॉस एट 16,408? दिस इज द लो। कैन आई प्लेस माई स्टॉप लॉस एट 16,408? ओके, तो कितने पॉइंट का स्टॉप हुआ? कैन यू टेल मी? अप्रोक्सीमेटली 142 पॉइंट्स का स्टॉप हुआ। सी, मेरा गणित थोड़ा वीक है, तो आप मुझे बताओ कि सही जा रहे कि नहीं, इफ आई एम रॉन्ग। सो यहां पर 16,000, आई एम अगेन रिपीटिंग, व्हाट इज माय स्टॉप लॉस? द लो ऑफ दिस कैंडल इज 16,438। उसमें से 30 पॉइंट्स लेस कर दिया, तो मेरा स्टॉप लॉस हो गया 16,408 इज माय स्टॉप लॉस। 16,408 is my stop loss. Okay, now 16,550 minus 16,408 अगर आपने किया तो 142 पॉइंट्स मिला ना एसएल का। Is it clear? Right, now from this point I will exit if I see a close below the prior candle low. Ideally तो वही है। So previous low के नीचे अगर आप देखोगे, वाव, एक भी क्लोज नहीं हुआ है। मे भी हो सकता था यहां आपका स्टॉप शायद ट्रिगर हो जाए, क्योंकि 30 पॉइंट नीचे आया कि नहीं वो देखेंगे, लेकिन ये मैजिक तो देखो, नॉट अ सिंगल कैंडल हैज क्लोज्ड बिलो द प्रायर कैंडल लो। इस यू कैन अप्लाई इट ऑन स्पॉट चार्ट पे, अप्लाई करना इज मोस्ट प्रीफर्ड, क्योंकि फ्यूचर पे यू गेट लॉट ऑफ विप्सॉस प्रीमियम डिस्काउंट के कारण। सो इट इज ऑलवेज प्रीफर्ड दैट यू अप्लाई दिस ऑन द स्पॉट चार्ट। नाउ ये कैंडल कितने पे क्लोज हुआ? अप्रोक्सीमेटली 17,200 के ऊपर ही हुआ, तो 17,220 ले लूं। 17,220 from 16,550. If you are going to check, can I say you are able to capture approximately 670 points of in just 2 to 3 days of time? In just 2 to 3 days of time, 670 points capture हुआ। You are going to trading into 4 lots and you will be able to make, बनता है कि नहीं? What I am trying to tell you, we are not going to use only this, इसके साथ में हम क्लब करेंगे टाइम साइकिल को भी। Okay, we are going to club this with time and we are going to club this along with Elliott wave also. Clear है? अगर हम देखेंगे, यहां पर हमने लॉन्ग किया, यहां पर एग्जिट कर दिया तो थोड़ा बना, थोड़ा लॉस हुआ। यहां पर शॉर्ट किया, यहां एग्जिट किया तो भी थोड़ा पैसा बना, थोड़ा लॉस हुआ। सो क्या होगा? यू विल मेक लिटिल, यू विल लूज लिटिल, बट व्हेन द ट्रेंड कम्स यू विल मेक इट बिग। एंड आवर इंटेंशन इज टू मेक इट बिग। करना है तो बड़ा करना है, दैट्स द बॉटम लाइन। करना है तो बड़ा करना है, नहीं तो नहीं करना है। लॉजिक ऑफ 30 पॉइंट इज माई ऑब्जर्वेशन that usually 30 points से बच जाता है, so that's why. So you can even do it on futures, you can do it on options, you can do it on any other method, it works super. अभी फ्राइडे का देखते हैं। फ्राइडे को मुझे बताओ, now let me ask you, you are understanding, right? Tell me, Friday was this candle, is this bullish or bearish setup as per the 3 conditions? यहां पर लॉन्ग करना है कि शॉर्ट करना है? फैंटास्टिक, तो इन एब्सोल्युटली, सो शॉर्ट करना है। जयेश, किरण, एब्सोल्युटली, मतलब शॉर्ट टर्म में ट्रेंड नीचे हुआ, इज इट क्लियर? वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेंड नीचे, तो फिलहाल बाई नहीं है, क्लियर है? इसका मतलब अगर मुझे इंट्राडे में ट्रेड करना था तो मुझे सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखनी थी शॉर्ट टर्म के लिहाज से। व्हाई? बिकॉज मंडे को, फ्राइडे को मार्केट ने यहां पर कंडीशन चेंज कर दी। अभी यहां पर नीचे आया, समझो, कैन आई से नाउ इफ यहां पर रिवर्सल कैंडल बनी, इट विल गिव अ क्लासिक अपॉर्चुनिटी
to again re-enter in the direction of the trend. Candlestick. चले 15 मिनट के चार्ट पे, every one of you, we are now going to look at this on a 15-minute chart. You can even do it on a 5-minute chart. So bottom line क्या है, समझ के चलना. What I am telling you is very important now. अगर hourly trend, if 1 hour trend is down, we will not take a buy signal on 15. मैं वापस रिपीट कर रहा हूं. This is known as multi time frame trading. Multi time frame, इसे कहते हैं मल्टी टाइम फ्रेम ट्रेडिंग. ये वर्ड बहुत फैशन में है, इसका मतलब क्या है वो मैं आपको अभी बताऊंगा. सो मल्टी टाइम फ्रेम ट्रेडिंग का क्या मतलब होता है, दैट you multi-time frame trading is look at the different time frames before pulling the trigger. Okay, so this is a very classic way. So we are checking Nifty on hourly chart, 15-minute chart, and then we will go on a 5-minute chart. Okay, clearly. So what we are going to do is, now we are going to go on a 15-minute chart. Now tell me, yahan par are we going to take the buy signal in this candle? Are we going to take the buy signal in this candle? Are we going to take the buy signal in this candle? You have to tell me. इसका अगर आपको मतलब समझ में आया, this is 15-minute chart. हाँ, 15-minute chart. ये 15 minutes पे है. Can I say that I will not take a buy signal? Why? Because my 1 hour chart is bearish. Because 60 minutes पे कैंडल नीचे है. हुआ ऐसे बहुत बार कि यार यहाँ बाय किया नीचे आ गया, बाय किया नीचे आ गया, समझ में नहीं आ रहा है कि यार क्यों ऐसा हो रहा है. क्या कोई बैठा है जो मुझे ही देख रहा है, जैसे ही मैंने ट्रेड लिया दैट पर्सन इज ट्राइंग टू सिंपली ट्रिगर माय स्टॉप लॉस एंड रिवर्स द मार्केट. ऐसा लगता है यार कि मेरे साथ ही हो रहा है, मतलब मेरे नसीब में नहीं है, मेरे डेस्टिनी में नहीं है. मैंने एस्ट्रोलॉजर को दिखाया, हाथ दिखाया, पामिस्ट को दिखाया, लेकिन सबने बोला कि मार्केट से आप पैसा नहीं कमा सकते, लेकिन मुझे लगता है मैं कमा सकता हूं. दैट इज व्हाट वी वांट टू से, राइट. लेकिन हो नहीं रहा, मतलब कुछ तो है. ऐसा लगता नहीं है कि यार बहुत पास में है हम इस चीज के, लेकिन जस्ट हो नहीं पा रहा, कुछ तो मिस आउट हो रहा है. दिस इज व्हाट इट इज. बिकॉज द टाइड इज ऑन द डाउन साइड, you are trying to go against it. So if you go to the shore of your ocean and if you are looking at an ocean waves which is coming out, so if you are looking at the ocean waves, can I say the ocean wave is coming towards the shore and the smaller tide are going against the shore? तो ये स्मॉलर टाइड्स है जो शोर के अगेंस्ट जा रही है और बड़ी टाइड फिलहाल नीचे है. तो ऐसे में स्मॉलर टाइड पे पैसा नहीं बनेगा, because you have to trade in the direction of the bigger tide. See, अगर आप water surfing करते हो, then you need to know that you have to ride in the direction of the wave. What is the direction of the wave? This is the direction of the wave in which you have to ride. Am I making sense? So the pullback should be used for selling. Is it clear, everyone? And look at it. When the hourly was positive, you went long basis of this method. You went long basis of this method on the hourly chart. यहाँ पर पॉजिटिव हुआ, 15 मिनट्स पे पॉजिटिव हुआ, मतलब आपने 17,320 पे लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की. After seeing this 17,325, do you see a single close below prior candle low until here? Can I say I am able to capture the move until 17,420 यहाँ तक, which means I am able to capture that 100 points in just what, few hours of time on Nifty. 4 लॉट अगर आप ट्रेड कर रहे हो, do the math, है ना. फैंटास्टिक. ये तो कुछ नहीं, अगर अच्छा ट्रेंड मिला आपको, if you are able to get a bigger trend,
you will see the fun of it, the bigger trend that you are capturing now. Just look at the bigger trend. ये तो छोटे fluctuations हो रहे, जब बड़ा trend आता है market में, at from this point onwards, if you are checking the entire move on the upside, you will see not a single candle यहाँ पर हुआ close, but again you will re-enter at this point, then you will again re-enter and go and all the way until this point. समझ में आ रहा है? Because the bigger tide is up, you are not taking the sell signal. You will enter here. Again, after entering here, you are able to capture this swing. Wow. You can use it on stocks. You can use it on options. You can use it on anything. You can use it, club it with any simple aspect of trading, and you will be looking at it as a most important and the simplest way of trading objectively in the direction of the trend. तो आज तक सुना था कि ट्रेंड के साथ ट्रेड करना है, आज पता चला ट्रेंड को देखना कैसे है और उसके साथ ट्रेड कैसे करना है। 1 आवर कैंडल देखनी है, 1 आवर कैंडल अगर बुलिश है तो 15 मिनट्स पे बुलिश सिग्नल लेंगे, 1 आवर कैंडल बेरिश है तो 15 मिनट्स पे बेरिश सिग्नल लेंगे। इज इट क्लियर? So before I move on from this, I would like to know how is this session so far. There are thousands of participants across here. I just want to know how is this session so far. Trend is the friend, absolutely. Session is fantastic, beautiful, must, amazing, good. Wow, I can clearly say that so many of you awesome, excellent. तो समझ में मल्टी टाइम फ्रेम, आज तक क्या हो रहा था ना, सब लोग खाली टीवी पे ज्ञान दे रहे थे कि यार मल्टी टाइम फ्रेम ट्रेड करना चाहिए, ये देखना चाहिए, वो देखना चाहिए. Now for the very first time we are seeing it happening together here. तो कल से आपको करना क्या है? कल से आपको ध्यान देना है 1 आवर कैंडल पे. 1 आवर कैंडल अगर बेरिश है, then you have to simply switch to 15 minutes and find out a trading opportunity on a 15 minute. इसके साथ टाइम और वेव थियरी को भी क्लब करेंगे हम साथ में. Okay, is it clear? So doubts being cleared by watching the webinar. Sunil is saying, Puran is saying it is excellent. Fantastic. So repeat karenge hum, but I just want to know if the session is excellent and you are able to understand every single thing that we are doing here. Fantastic. चलिए, what is time theory? हम करेंगे सब चीज, चलते हैं आगे. Before moving on, I want to just share across my Twitter and show you certain fantastic charts. ठीक है? Good session, right? Engaging. वही तो मार्केट के बारे में अगर बात करते, सी आई एम वेरी पैशनेट अबाउट इट एंड आई एम गोइंग टू डू दैट. सो इसके पहले एक पोल लेना है मुझे. आई वांट टू नो what type of trader are you. I'm taking a very quick poll over here and I want to just know that आप किस टाइप के ट्रेडर हो. आप फ्रेशर हो, इंट्राडे ट्रेडर हो, स्विंग ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो. People on YouTube, you can join me here where we are conducting this kind of poll. Wow, I can see so many of you are excited and talking about it is amazing. तो अगर आप चैट नहीं कर पा रहे, you need to ensure people on YouTube you subscribe to this channel. We are nearing that 29,000 now on YouTube. We want to be 30,000 soon. So subscribe to this channel and do join me on the Zoom. Okay, Sham Sundar, any coaching? Yes, of course. So I'm going to come to that. Let me open up my Twitter channel. I just want to know first from you all कि आप फ्रेशर हो, इंट्राडे ट्रेडर हो, स्विंग ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो. So I'm just going to come here and open up my handle. Just a second meanwhile. And Naveen Dutt is saying, for me Sunday is AK day. Okay, thanks. So ये वेबिनार अभी शायद नेक्स्ट काफी टाइम तक नहीं होगा, तो आज ध्यान देना आप, because this is very important. I've been doing it for quite some time and people are simply loving it, is the reason why I'm doing it again and again. So just try and focus here what I'm going to do next from here on. So I've been tweeting across and sharing across the chart and lot of these things on my Twitter channel.
So I'm just going to share across my Twitter channel here with you all. I'm ending the poll. यहाँ ध्यान देना. So I can see many of you are intraday traders. So we'll look at many examples from India intraday trader also. So यहाँ पर I've mentioned about Bangladesh economic crisis क्या हो रहा है. उसके अलावा ये सिंपल चार्ट देखो ना, बॉलिंगर बैंड्स को लेके कैसे देखना है उसके बारे में. इनफैक्ट आई एम गोइंग टू शेयर समथिंग फिनोमिनल. you know something like super trend which is such a simple way. ये कल हम मेंटरशिप में डिस्कस कर रहे थे in a very detailed fashion. So we have been discussing it in mentorship. This is the chart. So ensure you go and follow me on Twitter. There are so many things that you will know about it. यहाँ पर ऑप्शन का चार्ट है, ओपन इंटरेस्ट चार्ट है. चलिए इसी बारे में मैं आपको बताता हूँ. यहाँ पर if you are looking at this chart, this is on my Twitter handle. क्या आप मेरे चार्ट देख पा रहे हो यहाँ पर? ओके, इफ यू आर लुकिंग एट दिस चार्ट राइट नाउ, यहाँ पर यू कैन क्लियरली मेक आउट द लेफ्ट साइड पे. लेट मी जस्ट एक्सप्लेन कि ये क्या चीज है. सो ओवर हियर व्हाट यू आर सीइंग हियर इज ओपन इंटरेस्ट. I am sure many of you who are trading options might already know what is open interest. But look at this. The open interest that I am going to share across here is very different. This candle जो आपको ग्रीन कलर दिख रहा है, these are call options. This candle जो आपको यहां दिख रहा है, these are put options. ये जो फ्लोरेसेंट ग्रीन है, फ्लोरेसेंट ग्रीन कलर, this represent change in the call open interest. चेंज इन द कॉल ओपन इंटरेस्ट. सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं, मैं सिंपल लैंग्वेज में, ये जो ऊपर के साइड है इट एक्ट्स एज अ रेजिस्टेंस, ये नीचे के साइड है इट एक्ट्स एज अ सपोर्ट. तो रेड इज सपोर्ट, ग्रीन इज रेजिस्टेंस. आई एम अगेन रिपीटिंग, द रेड दैट यू सी इज सपोर्ट, द ग्रीन दैट यू सी इज रेजिस्टेंस. सिंपल है, ग्रीन मतलब रेजिस्टेंस, रेड मतलब सपोर्ट. ऐसा खाली याद रखना है. तो कहना ही से द, और बिगेस्ट कैंडल देखनी है. ये कैंडल भी, ये भी कैंडल ही तो है. दिस इज द बिगेस्ट कैंडल. डू यू एग्री विथ मी कि ये बिगेस्ट कैंडल है? ये वाली जो कैंडल है, कैन आई से दिस इज द बिगेस्ट कैंडल एंड कैन आई से दिस इज द बिगेस्ट कैंडल. सो कैन आई से दैट 17,500 है, दिस इज द 17,500 लेवल and 17,000. So do you agree with me that 17,500 is major resistance for the market and important support is 17,000? This is an indicator which we are using on Go Charting platform. You can use the code AK20 for अगर आपको वो कोई सब्सक्रिप्शन लेना है वहां पर कोई चार्ट का, तो AK20 is the code on Go Charting. I have just typed it. Okay. So लेकिन समझो ना पहले, प्लीज फोकस हियर. आई वांट यू टू फोकस ऑल योर अटेंशन हियर. डू नॉट गेट डिविएटेड. आई एम जस्ट आस्किंग यू टू replace. See, I am going to teach you in a very simple way. That is what I want to do. What I am asking is, this is known as OI profile. So you can use the code AK20 on Go Charting to get this OI profile. ट्विटर पे आप गो चार्टिंग को ट्वीट कर सकते हो, ठीक है, बट पहले समझने की कोशिश करते कि ये क्या है. लेट्स नॉट डिविएट एनीवेयर. सो इसका मतलब कहना ही से, मार्केट हैज फॉर्म्ड अ डबल टॉप काइंड ऑफ अ पैटर्न नियर दिस रेजिस्टेंस. सो नेक्स्ट सपोर्ट अगर यहां से नीचे आएगा तो यहां पर वंस इट ब्रेक 17,160, 17,000 इज द सपोर्ट. So can I say, if you are an option trader, can I say you can sell call option here? Sell calls कि मार्केट अगर नीचे आया या साइडवेज भी हुआ तो पैसा बनेगा. So I can sell OTM call option. Is it clear? OTM call option, out of the money call option आप बेच सकते हो. In order, because क्यों बेच रहे हैं हम? एक तो कैंडल स्टिक पे डबल टॉप बना, ये टॉप और ये टॉप सेम लेवल पे, एंड ये बना कहां पर, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. दिस फॉर्म्ड एग्जैक्टली एट 17,500 लेवल्स.
ओके, सो दिस इज सिंपली सुपर्ब, ये 1 आवर चार्ट है. So can I say now we are combining multiple things. This is known as open interest profile. ये ओपन इंटरेस्ट प्रोफाइल है. बहुत कम जन इसको इस तरीके से देखते हैं. मालूम है, सबको लगता है ओपन इंटरेस्ट हमें तो आता है, हमें क्या देखना है. नो, दिस इज एन ओपन इंटरेस्ट प्रोफाइल चार्ट. We are going to do this in much detail in option trading using technical analysis program, OTTA जिसे हम कहते हैं. इसको किस तरीके से प्लॉट करना है, कैसे क्लोजली देखना है, वो सब करेंगे. So I just wanted to share across these kind of charts are there on the Twitter. OTA मतलब out of the money option. We will do that in option trading using technical analysis program in much detail. So इधर पुट बाय करना है कि कॉल करेंगे, सब चीज समझेंगे वन बाय वन. ये समझ में आया आपको? समझ में आया? So there are so many things that I have already mentioned here. And in fact ये देखो, ये होने के बाद नहीं किया है, होने के पहले किया है. This is on 5th of August. Before even the market started moving down, this was shown there कि हम यहाँ major hurdle पे आ गए. So we need a decisive break above this level for further short covering. वो break होना चाहिए. So ensure you are following me on Twitter channel. You will get all of those things there. Also, I want to share across one more thing. My website wavesstrategy.com. This is my website which I founded the company. यहाँ पे एक article section है. This article section is very important. You will get lot of learnings and charts in this article section. So यहाँ पर mention किया है that 17,000 call option का चार्ट दिखा है, चाइना ताइवान टेंशन. So क्या होगा यहाँ से, कहां पर रेजिस्टेंस आएगा, all of those things are explained in much detailed fashion. So ensure you are looking at these various articles. There are various articles which is mentioned here. Bank Nifty, unbelievable movement as per time. Look at this chart and look at the time mentioned here जो मैंने आपको अभी बताया था. Okay, exactly how it behaved. So use this website, look at these charts and articles and everything, and you will be amazed to see how brilliantly it works. चलिए चलते हैं पीपीटी पे, आगे बढ़ते हैं. अभी we want to also see on the basis of wave theory. Now we will from Elliott wave we will enter into the world of wave theory. Shall we do that? Everyone, चले आगे Elliott wave के दुनिया में. Do you want to invite anyone along with you to learn this technique? हम Elliott wave को 5 मिनट पे अप्लाई करेंगे बैंक निफ्टी के. ओके, चलते हैं आगे. Let's just move on to the concept of Elliott wave. We will do it on 5 minutes. Don't worry. तो जो कैंडल टेक्निक है उसके साथ में हम Elliott wave यूज करेंगे, उसके साथ में हम क्लब करेंगे टाइम साइकिल को. So we will do all of those things together. Don't worry on that. Now, this is copper. See, before I explain you copper का chart, I want to tell you Elliott wave में क्या होता है. Elliott wave means that it moves 5 steps forward, 3 steps backward. ठीक है, 5 steps forward and 3 steps backward. That is what we call as Elliott wave. In this we see 1, 2, 3, 4, 5 forward and A, B, C. 3 steps backward. So Elliott wave means this is impulse pattern, 5 step forward, 3 step backward is corrective pattern. Now this 5 step forward and 3 step backward, there are certain rules. We are not getting into those rules. We will look at those things later on. First, let's just understand what it means, how it looks like, and how to go about it. So what we are going to do, this is copper chart. Okay, now before showing you on the copper chart, let me explain it to you on bank nifty directly. पहले चलते बैंक निफ्टी के चार्ट पे. I want to share across कि कैसे उसे देखना है and क्यों Elliott wave करना है. बिकॉज Elliott wave से आपकी जो फोरकास्टिंग होगी, फ्यूचर देखने की एबिलिटी, आगे का देखने की क्षमता, वो बहुत जबरदस्त होगी. बिकॉज ऐसी कोई भी टेक्निक नहीं समझ में आएगी जो आगे का देख सकते हैं. ये एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं. दिस इज
the chart which shows that overall a triangle pattern can form. Imagine अगर यहां पर जब था निफ्टी 18,300 पे, आपको किसी ने बताया होगा कि यहां से ऊपर जाएगा, then we will continue to fall down, then we will continue to rise up, then we will again do and continue to fall this way. If this is the future path, you know Elliott wave को क्या कहते हैं हम? GPS of the market. It's called as the GPS of market. GPS क्यों कहते हैं? Because it will tell you from where until where can markets go. It is going to give you a clear understanding of how will the market move, when will it move and कैसे वहां जाएगा. तो इसे कहते हैं GPS, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम. हम रोड पे यूज करते हैं ना, यहां से जाने के लिए, मुंबई से पूना जाने के लिए जीपीएस अप्लाई किया, कहां से कहां पहुंच रहे, कब पहुंच रहे, कैसे. सिमिलरली एलियट वेव इज द जीपीएस. इट इज टेलिंग यू द फ्यूचर. यहां पर अगर हम एक्सपेक्ट करें कि ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, देखते ऐसा हुआ क्या. एंड दिस वाज डन ड्यूरिंग द मास्टर ऑफ वेव्स सेशन व्हिच वी फोरकास्टेड. लुक एट दिस चार्ट. इट वेंट अप, इट वेंट डाउन, इट वेंट आल्सो अप अगेन. फिर यहां से एक्सपेक्ट किया था हमने, दिस वाज इन फेब्रुअरी, अर्ली फेब्रुअरी, दैट मार्केट शुड कम डाउन एंड क्रैश एंड देन रिवर्स बैक ऑन द अपसाइड. The Russia-Ukraine war was announced here. You know, Russia-Ukraine war कहाँ है? यहाँ पर आया और निफ्टी ने लो कहाँ बनाया? 16,200 पे, और फिर वहां से बाउंस बैक हुआ after Russia-Ukraine war announced. So can I say that this is brilliant? Prashant Jamdar is here. He's saying I am witness to this chart during the BMW batch. BMW is become market wizard, जिसमें हम ऑप्शन ट्रेडिंग और वेव थियरी दोनों को क्लब करते हैं. So he was there. Fantastic, Prashant. Thanks for vouching it. Dhaval Damani is here, who was also there during that program. Wow, it's great to see you guys here again. So आप लोग ने देखा होगा इसका मैजिक, राइट? जो हमने फोरकास्ट किया था बिफोर. सोचो, मतलब वॉर होगा, वो फोरकास्ट के पहले पता है कि वॉर हो सकता है, या जो भी कुछ न्यूज है, न्यूज आएगी. और न्यूज आई रशिया यूक्रेन वॉर की, एग्जैक्टली वहां पर, एंड फिर मार्केट ने रिवर्स किया. So it works. Look at, this is the proof, and there are people who are a part of that program. Look at the crash. This is Russia Ukraine. लेकिन ये फोरकास्ट पहले किया हुआ था. Look at this chart. सी बना, ऊपर गया, कंप्लीट किया, नीचे आया, कंप्लीट किया, ऊपर कंप्लीट किया, and look at the crash. And look at this chart which was shown. है ना मैजिक? That's the magic. That's the fun of trading. You know, when you know the future, आपकी एंजाइटी बहुत कम हो जाएगी. You are going to trade fearless is what I call. Why fearless? Because अभी तक ट्रेडिंग डर डर के करते थे, लेकिन now since we know how it functions, we can trade fearless. That's the beauty of it. तो चलते हैं आगे. इसके साथ मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा. You know, one more thing. This is for you to understand it works. क्योंकि काफी सारे जन जो पहली बार है, उन्हें पता नहीं है कि ये चीज चलती है, नहीं चलती है, क्या प्रूफ है. दिस इज द प्रूफ इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू दैट दिस इज अ क्लासिक वे ऑफ ट्रेडिंग एंड इट वर्क्स लाइक मैजिक. So Sunil Kumar has written something very interesting. I'm going to share across this screen here. Sunil Kumar is saying your teaching is so sweet, everybody can understand easily. Before subscribing your channel, I was thinking Sunday is fun day. After subscribing, I am thinking Sunday is fun day and learning day. Thanks for a lot of new learnings. Thank you very much, Sunil. Great to know that. अभी तो देखो, अभी तो आप और देखो आगे how it functions, how the wave theory functions. This is a research report which was published in July 25th, 2013. Okay. July 25th, 2013 को ये रिपोर्ट हमने पब्लिश की थी, which was in the year 2013. In that year, 2013, आज से 8 साल पहले ये फोरकास्ट किया था that Sensex will touch 61,000 लेवल. इसमें दो टेक्निक्स है जो फोरकास्ट की थी हमने. इसमें दो टेक्निक से ध्यान देना. The one of the technique is 272 week cycle, which means that every 272 week
market will change back to up. Upside, 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 upside. So we expected from here, look at this. We expected कि यहाँ से fall आएगा, it should go up. Fall, ये COVID का fall भी आया, and then it should rally. So 61,000 level should be made, was forecasted in the year 2013. Imagine. Now, if someone would have told you, this is a weekly chart of Sensex, जब से वो launch हुआ था 1979 से लेके अभी तक में. If someone would have told you in 2013 that Sensex will touch in 7 to 8 years time के साथ, ऐसा नहीं 100 साल में टच होगा, नहीं 7 से 8 साल में होगा. Don't you think you would have been able to make a lot of money by investing in the market? Let me just show it to you. If you just simply scroll down, I mentioned that clearly. Look at this. Sensex will touch 61,000 levels by 2020. 2020 लिखा है, लेकिन सुनो आगे. 272 वीक्स का साइकिल है, वेव थियरी और साइकिल दोनों के बेसिस पे. 272 वीक्स में 27 वीक्स का लीवे देना है, तो मतलब जुलाई 2021 तक, जुलाई 2021, सेंसेक्स शुड बी 61,000 लेवल. By July 2021, Sensex should be 61,000 level. Sensex touched the high of 61,000 in October 2021. It made a top near that level and reversed. Imagine, this forecast was done 7 to 8 years prior. Despite of all the event that happened, India-China rift हुआ, India in elections हुए, US elections हुए, so many things happened. COVID 2020 crash हो गया. You know, COVID crash. Despite of that, Sensex then again rise to touch this level because it was supposed to do that. COVID did not stop markets from going towards lifetime high of 61,000. So that's the power of wave theory. कैसे किया? 5 step forward. You know, this is step 1, step 2, step 3, step 4. This is the 5 step forward. Okay. So यहाँ पर 5 स्टेप फॉरवर्ड है और साथ में यहाँ पर टाइम भी है. वर्टिकल लाइन जो आप देख रहे हो, इसे टाइम साइकिल कहते हैं. वी हैव बोथ एलियट वेव एंड टाइम साइकिल. ये तो कुछ भी नहीं. नाउ लेट मी मूव फॉरवर्ड एंड एक्सप्लेन इट टू यू अबाउट बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी वाज ट्रेडिंग एट 12,000. बैंक निफ्टी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वाज ट्रेडिंग नियर 12,000 लेवल्स. 12,000 पे था बैंक निफ्टी. हमारा टारगेट था 40,000. Bank Nifty will touch 40,000 in 8 years of time. Third is not the shortest. So if you go and check, it is mentioned Bank Nifty will touch 40,000. जब वो 12,000 था, might be sound irrational or crazy. So can you imagine someone forecasting in July 2013 में 8 years prior that Bank Nifty will be 40,000. You know, people laughed क्योंकि वो 12,000 पे था कि अगर बैंक निफ्टी 40,000 पे जाएगा तो इकोनॉमी कहां पहुंच जाएगी. एंड देखो क्या हुआ, है ना, जबरदस्त. Okay, Ganguly Bishwajit is asking, now where do you think Nifty in 2024? See, those things I have already discussed with my mentees and with the participants of my program. वो करेंगे हम अभी नहीं. उसके लिए I need to clearly explain you everything. And by the way, your name resembles to Saurabh Ganguly, who is actually promoted our Ashish Kyal Trading Gurukul. You know, Saurabh Ganguly has promoted Ashish Kyal Trading Gurukul. So I just recollected it. Last week ही मैंने वो वीडियो डाला है YouTube पे. You can go and check that later. So great guys. So आगे चलते हैं वेव थियरी के ऊपर. चले क्या प्रैक्टिकल चार्ट पे देखने बैंक निफ्टी पे कैसे ओवरऑल वेव थियरी क्या है, क्या बता रही है, कैसे हमें चेक करना है, और व्हाट इज द ट्रेंड फ्रॉम हियर ऑन, एंड हाउ डू वी लुक एट द मार्केट एंड हाउ डू वी ट्रेड द मार्केट. शैल वी गो अहेड एंड चेक दैट राइट नाउ? Okay, let's just do that. Let's just do that on Nifty 1 hour chart. I'm going to open up Nifty 1 hour chart and I'm going to share it across with you step by step. We'll go to 15 minutes, we'll go to 5 minutes. We are going to do that together. So I'm going to share across this chart with you all. This is Nifty 1 hour chart. अभी पैटर्न देखना, ध्यान देना, but
This is something very phenomenal. What I am going to share it across to you. Over here, if you look at it, you can clearly see 5 steps forward. ठीक है? This is 1, 2, 3, 4 and 5. इसके अंदर कभी कभी क्या होता है, द थर्ड वेव विच इज देयर इज द लॉन्गेस्ट, सबसे बड़ा और सब डिवाइड हो जाता है. सो हाउ विल इट लुक लाइक? वी हैव 1 2, इसके अंदर भी 1 2 3 4 and 5 and this is how it looks like. So this becomes 1 2 3 4 and 5. okay, इसके अंदर क्या मार्क हो गया? अगेन वी हैव स्मॉलर 1, smaller 2, smaller 3 here, smaller 4 and smaller 5. Now let us try to replicate this. इस चीज को चार्ट पे रेप्लिकेट करने की कोशिश करें. चले आगे. Let us try to replicate this. So can I say this is 1 2? okay, ये 1 2 हुआ. Everyone, I want to participate. I want you to understand this very clearly now. 1 कहां से स्टार्ट करना है? ये लोएस्ट पॉइंट था. कैन यू सी ऑन दिस चार्ट? दिस इज द लोएस्ट पॉइंट. दिस इज वेयर आई एम स्टार्टिंग 1 फ्रॉम. नेहा, इज इट क्लियर? okay, any plans to travel to? Preeti is asking no plans right now to travel to Ahmedabad, otherwise I would have done that. okay, फिलहाल तो हम यहां पर है. okay, over here I can clearly see 1 2 हो गया. उसके बाद क्या है? you have to tell me. can I say this is again 1, this wala, and again 2? are you with me? Are you understanding what are we trying to do here clearly? What we want to understand from this chart is whether this is, what is the support level now? We are trying to form a very clear understanding on how the overall chart looks like. Now इसके साथ में what is more going to happen is इसके अंदर जो थर्ड वेव है ना, वो भी सब डिवाइड हो रहा है. So this becomes 1 2 here. Look at this now. This is smaller 1 2. This is third. I'm giving you the address. This is fourth. okay, that's how it is. This is fifth, which completes the third here. This is the fourth wave which is going on right now, which will complete fourth. Then we will have a fifth here. I'm not confusing you. This is going to complete the third, which is this third. Then we will have a fourth coming down, 3 waves down, which is this fourth. Then we will have the fifth wave again going up. This is the 5. So this is the path of Elliott wave path for Nifty. Imagine, मतलब कुछ भी अप्लाई नहीं किया and you are able to see the path of Nifty, the GPS of the market. So where are we placed right now? Here. What do we expect next is this. Wow, this is phenomenal. This is the path of Nifty. okay, for the coming week or weeks, whatever you want to say. Path of Nifty for coming week using simple powerful Elliott wave impulse pattern. okay, here it is. And clear है? I'll again share it across कि क्या है. okay, this is the path of Nifty. Let me just save across this chart, तो मैं आपको बता पाऊंगा कि ऐसा सोचा था, लेकिन ये फ्यूचर है. This is what we are thinking should happen. लेकिन इसके साथ में क्या कंबाइन करना है हमें? Can someone tell me? Along with this, what do we want to combine? Along with this, we want to also combine time. Fantastic, lovely. I think आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि कैसे देखना है मार्केट को, कैसे ट्रेड करना है. This is on a 1 hour chart of Nifty. We are looking at the GPS of the market. Isn't this fantastic? समझ में आया? कैंडलस्टिक और टाइम दोनों को कंबाइन करना है.
इज इट क्लियर एवरी वन ऑफ यू? है ना इंटरेस्टिंग चीज, समथिंग वेरी वेरी डिफरेंट देन व्हाट। सो आने वाले वीक में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम? मंडे को एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डाउन मूव आएगा, ट्यूसडे को पुल बैक आएगा, वेनसडे से फिर डाउन आएगा, एंड बाद वेनसडे थर्सडे जो भी है। सो दिस इज हाउ द कमिंग वीक कैन बी। सो शैल आई राइट इट डाउन? शालिनी सिंह, आई एम प्राउड टू बी योर स्टूडेंट। शैल आई राइट इट डाउन? सो मंडे, ये हमने किया था लास्ट टाइम भी, एक बार याद है, मंडे विल बी अ डाउन डे, ठीक है। ट्यूसडे, ट्यूसडे को एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं हम? ट्यूसडे विल बी एन अपसाइड। ट्यूसडे, मंडे कौन सा डेट है? 8th, विच इज टुमारो। ट्यूसडे 9th। वेनसडे, वेनसडे इज, लेट मी जस्ट मेंशन, विच इज 10th। सो वेनसडे हो सकता है कि शायद हम पहले ऊपर जाए, थोड़ा ऊपर जाएंगे, एंड देन वी विल कम डाउन अगेन वेनसडे से। थर्सडे फ्राइडे, व्हाट डू वी एक्सपेक्ट? मार्केट्स टू कम डाउन थर्सडे फ्राइडे, एंड इसके साथ में हम टाइम को भी क्लब करेंगे ना। फ्राइडे मार्केट्स टू कम डाउन विच इज 11th। अच्छा, ट्यूसडे इज हॉलीडे, ट्यूसडे इज हॉलीडे, सो ये डेट थोड़ा सा आगे चेंज हो जाएगा, थोड़ा सा डेट चेंज हो जाएगा, बिकॉज ट्यूसडे इज अ हॉलीडे, सो वी माइट वांट टू रीवैम्प दिस थिंग। तो थोड़ा सा चेंज होगा क्योंकि ट्यूसडे हॉलीडे है। सो लेट मी जस्ट मेंशन इट हियर, ट्यूसडे इज हॉलीडे। ओके, लेट मी, ये क्या हो गया? I'll just make a note here. It's not holy, it's holiday. Wednesday is 10th, 11th and 12th. तो वेनसडे हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं? मार्केट में मंडे फॉल आएगा, वेनसडे पुल बैक आएगा, 11th को टॉप बनेगा। यू नो 11th क्यों इंपॉर्टेंट है? फैंटास्टिक धवल, 11th इज पूनम पूर्णिमा लूनार साइकिल एज वेल। वाओ, क्लासिक। तो कहना इसे 11th is going to be, market will be here, which is 11th। समझ में आ रहा है आपको? मार्केट कहां होगा 11th को? 11th of August, which is also full moon। क्लियर है एवरीवन? सो वी शुड फॉर्म अ टॉप अराउंड फुल मून। फ्राइडे को फिर क्या होगा? फॉल आएगा, एंड मे बी शायद बाद में रिवर्सल आएगा। सो फुल मून के साथ मुझे थर्सडे को फॉल कंफर्मेशन मिला, सिंपल है। सो कैन आई से माय एलियट वेव with lunar cycle is simply superb। 11th is Purnima, na? So we are clubbing both of those things together. That's the beauty of it। समझ में आया अभी कैसे ट्रेड करने आने वाले वीक में मार्केट को? सो देखेंगे, लेकिन वी हैव टू ऑब्जर्व, वी हैव टू गो टुगेदर विथ इट। सो वी आर गोइंग टू डू दैट, ऑल ऑफ दोस थिंग्स टुगेदर। शैल वी मूव ऑन अगेन अहेड? चले क्या आगे की ओर? लेट्स लुक एट this and a simple 15-minute chart for option trading। तो ऑप्शन में ट्रेड कैसे लेना है अभी? दैट्स द बॉटम लाइन, राइट? अल्टीमेटली ट्रेड लेना है। तो ऑप्शन में ट्रेड कैसे लेना है? मंडे को सेलिंग प्रेशर हो सकता है, और शायद सेलिंग के बाद में थोड़ी बाइंग वापस आ सकती है मंडे, क्योंकि यहां से नीचे आएगा, एंड देन वी माइट अगेन शो गेट अ पुल बैक। सो which means that clearly we can see that यहां पर से जो पुल बैक आएगा, दिस पुल बैक विच इज गोइंग टू कम अप, इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं ऑप्शन में? कैन आई सेल कॉल ऑप्शन ऑन मंडे? कैन आई सेल कॉल ऑप्शन ऑन मंडे? क्योंकि वेनसडे से पुल बैक है, तो मंडे भी नीचे जाके ऊपर आएगा, वेनसडे ऊपर होगा, थर्सडे फ्राइडे नीचे होगा। इसका मतलब मार्केट नेट नेट का मूवमेंट कॉल सेल करना है पुल बैक्स पे। तो मतलब मैं 17,700 का कॉल सेल कर सकता हूँ, 17,800 का कॉल सेल कर सकता हूँ। कैन आई बाय अ पुट ऑप्शन? यस। कभी से पुट ऑप्शन बाय करेंगे हम? थर्सडे से। सो मंडे से क्या करना है हमें? मंडे को कॉल सेल करना है, ट्यूसडे छुट्टी है, वेनसडे को कुछ नहीं, वेनसडे को पुल बैक की वेट करके पुल बैक पे फिर से कॉल सेल कर सकते हैं, थर्सडे से पुट बाय करने की सोच सकते हैं। लेकिन क्या हम जाते ही तुरंत पुट बाय कर लेंगे? नहीं ना। We are not going to buy the put just like that। What we are going to do is
we are going to buy the put only and only if we see a candle. मंडे को पुट बाय करना है आपको, लेकिन कंफर्मेशन चाहिए, थोड़ा सा पुल बैक आएगा, पुट का वैल्यू 2 दिन में डिटोरिएट होगा। अगर आप मंडे पुट बाय करेंगे, वेडनेसडे तक उसका वैल्यू कम हो जाएगा कि नहीं? आर यू विथ मी? समझो ना बात को, क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? सो दिस इज नॉट मी, दिस इज द थियरी दैट इज सजेस्टिंग 1 hour candle, fantastic Praful. You need hourly candle confirmation also along with wave theory. So 11th 12th को पूर्णिमा है, so 11th को जो पूर्णिमा की हम बात कर रहे हैं, 12th को पूर्णिमा है as per Panchang. So around that area we should start seeing topping. Is it clear? So we might see 12th है, I think पूर्णिमा is on 12th, but ठीक है, anyways हमारा path similar ही है, which not going to change much. Is it clear? Raksha Bandhan market is open. Market doesn't remain closed on a Raksha Bandhan. है ना? फैंटास्टिक। चले 15 मिनट के चार्ट पे देखने के लिए। लेट्स जस्ट मूव नाउ। सो देखेंगे ये ऐसा होता है कि नहीं। हमने पूरा मार्केट का पोस्टमार्टम किया है। पोस्टमार्टम तो नहीं, होने के बाद होता है, हम होने के पहले बता रहे। तो हमने पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया मार्केट का, यूजिंग द जीपीएस ऑफ द मार्केट। Are you guys excited to see something like this, such a phenomenal stuff that I have talked about? Okay, 5 मिनट के चार्ट पे मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। 5 मिनट पे चलिए, दिस इज अ 15 मिनट चार्ट ऑफ निफ्टी। यहां पर ये पूरा का जो फॉल आया ना, दिस इज जस्ट वेव ए। ये जो पूरा राइज आया, दिस इज वेव बी। बी के अंदर भी 3 वेव्स आते हैं। सो कैसा है ये फॉल? 3 वेव्स अप and again we will see a fall like this. So B के अंदर A, B, C, 3 waves up, and यहां से we are seeing a fall which can come this way. This is 5 minute chart of wave theory. Superb है। So देखिए, there are many people who are thousands of participants here, and there are so many chat and questions. I might not be able to answer all of your questions, so please don't mind. ऐसा नहीं मैं आपको इग्नोर कर रहा हूँ, लेकिन सब क्वेश्चंस का मैं आंसर नहीं दे पाऊंगा, इसीलिए फॉर नाउ। सो फिलहाल हम कहां पर है? एज पर दिस जीपीएस, ए हो गया, बी हो गया, हम अभी फिलहाल यहां पर है, यहां पर कहीं पे, ठीक है। ये 5 मिनट चार्ट है। दिस इज वेयर वी आर राइट नाउ ऑन अ 5 मिनट चार्ट ऑफ निफ्टी as per Elliott wave. We are here on a 5 minute chart. है ना मजेदार वाली बात? You can even apply it on Elliott wave on a 5 minute chart. Can you imagine that? चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी चीजें अभी तो चर्चा करनी है। मुझे आपको टाटा मोटर्स का चार्ट दिखाना है, क्रूड ऑयल दिखाना है, lot of those things I want to share it across with you all. So I'm going to do that and बहुत सुपर्ब चलता है ये चीजें। सो इसके साथ में एक और चीज दिखा देता हूं मैं। चलिए, लूनार साइकिल। डू यू वांट टू सी द लूनार साइकिल हियर? शैल आई अप्लाई? तो इंडिकेटर्स पे जाना है, यहां पर मून करके लिखेंगे तो लूनार मून फेजेस आएगा। यहां पे मैंने अभी अप्लाई कर दिया लूनार साइकिल डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे आई हैव अप्लाइड लूनार साइकिल। लुक एट दिस साइकिल नाउ। आई एम गोइंग टू शो यू समथिंग फिनोमिनल। मतलब आज तक कभी लाइफ में सोचा नहीं था ऐसी कुछ चीजें होती भी है। मून हैज अ ह्यूज इम्पैक्ट। सी, आई एम नॉट एन एस्ट्रोलॉजर, आई हैव नो क्लू हाउ एस्ट्रोलॉजी वर्क्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट आई नो हाउ द मार्केट बिहेव्स बेसिस ऑफ टाइम, basis of time. Okay, I've been practicing this and it is working like magic for my trading. Kaise? Can I say this is full moon? Okay, and this is new moon. ये new moon है। new moon का मतलब क्या हो गया यार? ये full moon है। So again I'll repeat, this is no moon. new moon मतलब no moon या अमावस्या, and this is full moon over here. Okay, I'm just mentioning it here. Full moon. Now, Nifty as per lunar cycle is what I want to tell you. As per lunar cycle, how will it behave in coming week? When
12th August is Purnima. When 12th August is Purnima, how will Nifty behave as per this lunar cycle? Now let me just explain it to you. Just let me know if you understand this. This is a full moon which happened here and Nifty fall. Okay? This is a full moon, Nifty fall. This is a full moon, Nifty fall. This is a full moon, Nifty ने top बना and look at the fall. This is full moon, Nifty topped out. Look at the fall. रशिया यूक्रेन के वक्त पूर्णिमा का आया था. This is full moon, Nifty moved sideways. इसमें fall नहीं आया. This is full moon, Nifty topped out and fall. This is the full moon, and if you look at this full moon, this is the only full moon जहां पर Nifty ऊपर गया फिर नीचे आया. That's the only one. This is the full moon, Nifty यहाँ पर था, यहाँ से. This full moon, Nifty still corrected for 3 days. In fact, CNBC खिलाड़ी नंबर 1 में ये यहाँ पर जीता था, तो टीवी चैनल पे हमने डिस्कशन किया था कि फुल मून पे प्रेशर बनता है मार्केट में एटलीस्ट 3 दिन के लिए. I am again repeating, this was the discussion happened on CNBC Awaaz. You can go and check my video on YouTube where I discussed that on a full moon, Nifty will form a top at least for 3 days, and this discussion happened on an international business channel. Can you imagine that? If there is no conviction, no one will entertain you there. But this happened, and that's where it formed a top. 3 दिन का correction आया, and then it happened. Shalini is saying, I remember, sir, so I messaged you also. Exactly. Raju Lanka is here. He's saying, I remember you talking on CNBC hours about it. And next full moon आ कहाँ रहा है? यहाँ पर होंगे, यहाँ पर. Wow, which is around Thursday के time frame में. So can I say get ready? Can I say you should get ready now? आने वाले थर्सडे से मार्केट में दबाव बनना शुरू हो सकता है उसके आसपास से. मतलब ध्यान रखना है कि भाई फुल मून वापस आ रहा है तो मार्केट में मंदी आ सकती है एटलीस्ट 3 से 4 दिन की. 3 से 4 दिन के लिए मैं बोल रहा हूं, ज्यादा नहीं. 3 दिन की बात करें तो कैन आई से दैट? आर यू विथ मी? हाउ द लूनार साइकिल वर्क्स? सी आई हैव नो क्लू अबाउट प्लैनेटरी मोशंस एंड हाउ इट वर्क्स, बट ये चलता है यार. So that is how it is. That's why you combine these techniques. है ना observation? Ramula is saying excellent observation. So guys, isn't this amazing? So I want to know how are you finding this session? Again, I am asking you the same question, जिससे मुझे पता तो चले. How is the session? Is it an eye opener or not? How is the session so far? Fantastic, excellent, wow, right? Changing life transformation for you all. Is it not different than? आज तक सोचा भी था ऐसा कुछ हो सकता है कि यार आज तक मून को देखा ही नहीं. हम मुंबई में तो स्टार छोड़ो मून भी नहीं दिखता है, लेकिन ऐसा कुछ चलता है, ऐसा कुछ होता है, अभी पता तो चला. एंड ये मैं नहीं कह रहा यार, ये है, इंडिकेटर है यहाँ पे. सो इमेजिन पीपल आर यूजिंग इट बट रिटेलर्स डोंट नो. Moon cycle is 28 to 29 days of lunar cycle. There is a solar cycle of, cannot believe this, right Jit? Absolutely. Super. चलिए अभी आगे बढ़ते हैं. बहुत सारी चीजें मुझे और भी करनी है, यही नहीं. So let me now move on further very quickly to something like this. इस चार्ट के बारे में हमने डिस्कस किया. So this is open interest profile. We are going to discuss this in much detail. In much detail, we are going to discuss about this open interest profile in option trading using technical analysis program, which we call as OTTA. उसमें डिस्कस करेंगे. अभी फिलहाल ये कॉल है, ये पुट है, ये बहुत ही अलग तरीका है देखने का मार्केट को. आगे बढ़ते हैं. दिस इज अलोंग विथ वेव थियरी. यू नो 17,517 का लेवल मैं कब से बोल रहा हूं? जब निफ्टी 17,000 पे था. You remember we derived it together in the webinar that when Nifty was at 17,000, I was talking about 17,500 levels. What I am trying to tell you, this is as per wave theory and other thing. Nifty का हाई बना है 17,490 पे, बहुत पास में है उसके, जो 17,000 से था. सोचो 500 पॉइंट मिला वहां पे. Let's just move forward now. This is the technique.
when I was again Nifty 17,200 था, I was talking about 17,517 levels. This is the technique I am talking to you. This has something on the right side which is known as a volume profile. ये जो आप देख रहे हो ना, this is a volume profile chart. The volume profile shows this is 17,200 level, which is very important. क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट वॉल्यूम है, यहाँ पर बड़े प्लेयर्स, बिग प्लेयर्स. दिस इज behind the scene. See, I was working with hedge funds. I have seen what they do. This is behind the scene of what they are seeing in the market as volume. Behind the scene हो क्या रहा है, वो ये चीज देखते हैं. यहाँ पर बड़े प्लेयर्स ने पोजीशन बना रखी है, तो कहना इसे 17,200 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है. और वो गेन लेवल भी है. गेन लेवल किसी को याद है कौन सा है? 17,227. That's the gain level. So this is volume profile. ऑपरेटर क्या करते वही तो बता रहा हूं आपको मैं. ऑपरेटर आर लुकिंग एट दिस काइंड ऑफ डेटा, क्रिएटिंग द पोजीशंस. वो लोग पोजीशन क्रिएट करें, इसलिए इतना वॉल्यूम हुआ है 17,200 पे. दिस इज वॉल्यूम प्रोफाइल विथ वेव थियरी. दिस इज भारती एयरटेल चार्ट. कैन यू टेल मी वेयर इज द हाईएस्ट वॉल्यूम दैट हैज टेकन प्लेस हियर? भारती एयरटेल चार्ट. These are done by big players. हाँ, ये वॉल्यूम बड़े प्लेयर से की गई है. Can you see that? So can I say भारती एयरटेल 703 का जो लेवल है, वहां पर मेजर पोजीशंस अनवाइंड हुई थी पहले. तो यहां पर भी रिवर्स हुआ, मतलब यहां पर बड़े प्लेयर कोई बैठा हुआ है, यहां पर बड़ा प्लेयर बैठा हुआ है, इसको आसानी से ऊपर नहीं जाने देगा. So which means big player is sitting right here, which will not allow it to go easily up. So कहां पर ऊपर जाएगा तो ये ब्रेकआउट आ जाएगा. अगर भारती एयरटेल 720 पहुंच गया, ये वाला जो वॉल्यूम है 720, इतनी अच्छी तेजी आप देखोगे ना ये स्टॉक के अंदर, यू विल बी लाइक वाव. लेकिन 720 इसे क्रॉस करना होगा. अगर उसने नहीं क्रॉस किया तो इट विल कम बैक टुवर्ड्स दैट लेवल ऑफ 680 ऑन द डाउन साइड. यहां पर, क्योंकि यहां पर वॉल्यूम है, यहां पर वॉल्यूम है, और सबसे बड़ा वॉल्यूम इधर है. तो भारती एयरटेल का रेंज हमें मिल गया 720. ब्रेकआउट लेवल है, ब्रेकआउट के लिए 720 देखना है, और नीचे का सपोर्ट लेवल है 680. कैन यू फॉर्म एन ऑप्शन स्ट्रेटेजी बेसिस ऑफ दिस? Are you able to see the screen, everyone? Can you not form an option strategy in Bharti Airtel on the basis of this simple technique of volume? सोचो अगर आप इसके साथ ओपन इंटरेस्ट भी कंबाइन करोगे, वाव, है ना मजेदार, है ना आई ओपनर. आर यू एबल टू सी माई स्क्रीन? यस, एग्जैक्टली प्रदीप. ओपन इंटरेस्ट वुड इंप्रूव. यस, 720, क्योंकि यहां से हमने थोड़ा लीवे दिया. ठीक है, हमने यहां से अप्रोक्सीमेटली 3% का लीवे दिया. वॉल्यूम प्रोफाइल है, वॉल्यूम नहीं है. ये राइट में देख रहे, वॉल्यूम नीचे आता है. दिस इज डिफरेंट. यू कैन इनफैक्ट, दिस इज निफ्टी 15 मिनट्स चार्ट ऑफ ऑप्शंस. लुक एट दिस टू मूविंग एवरेज. दिस टू मूविंग एवरेज, कैन आई से पूरे के पूरे अप ट्रेंड में, यू नो ये कहां पर लेवल था? दिस वाज अराउंड 25 to 30 लेवल था. ये 30 से लेके निफ्टी ने 150 के ऊपर का आंकड़ा टच किया, 150 अबव. एंड कैन यू सी द मूविंग एवरेज क्रॉसओवर हैपनिंग हियर नाउ? दिस इज निफ्टी ऑप्शन चार्ट. हाउ मेनी आर यू आर ट्रेडिंग ऑप्शंस? Buying and making money in option, not selling. I'm asking you, who all are here who wants to buy and make money in options? Okay, I can say so many of you. Jayesh, Lokesh, Sangmesh, Preeti. Wow, fantastic. बहुत सारे जन है. You know the simplest of the method. लेकिन मूविंग एवरेज कब यूज करना है और कब यूज नहीं करना है, और कैसे देखना है, और ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम प्रोफाइल से कैसे क्लब करना है, ये चीजें हम करेंगे very clearly. We are going to do that. So अभी इस पे मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा. This is going to be
discuss in much detail in OTTA, very much detail. Do you want to be a part of that 2 days of program, 12 hours of session where we discuss about these big players, operators, what are they doing, looking at the volume, looking at open interest, looking at this concept? Do you want to be a part of this? Most of the answers will be there because अभी टाइम का अभाव है, समय का अभाव है, समय बड़ा बलवान है, तो लेकिन अभी फिलहाल तो अभाव है। तो लोग क्या बोलते हैं कि आपको खाली प्राइस पे फोकस करना है। मैं बोलता हूँ प्राइस और टाइम दोनों पे फोकस करना है। ओके, वेरी क्लियरली, यस सुनील, यू विल गेट द एक्सेस, डोंट वरी ऑन दैट, वेरी क्लियरली। सो नाउ वी वांट टू क्लियरली अंडरस्टैंड वन थिंग। चलिए ये एक और चार्ट है, ये ऑप्शन का चार्ट है, इस पे वॉल्यूम प्रोफाइल और ये अलग चीज है, यहाँ पर अभी नहीं मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आई एम गोइंग अहेड। वेव थियरी पे हमने देखा 5 स्टेप्स फॉरवर्ड यहाँ पर हुआ एंड देन 3 स्टेप्स बैकवर्ड, दिस इज बीएससी चार्ट, 5 स्टेप्स फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप्स बैकवर्ड बताया। केपीआईटी 5 स्टेप्स फॉरवर्ड एंड देन 3 स्टेप्स बैकवर्ड, वेरी क्लियरली वी विल सी दिस हियर। टाइम, अभी टाइम पे चलते, सी सब लोग बोलते हैं भाव भगवान छे, मैं बोलता हूं भाव भगवान छे, समय बलवान छे। आपको भाव और समय दोनों के साथ चलना है। अगर खाली भाव देखा समय नहीं देखा तो पैसा नहीं बनेगा। तो भाव और समय दोनों के साथ चलना है। भाव भगवान छे, समय बलवान छे। यहां पर समय से बारे में मैं आपको दिखाता हूं। इफ यू आर लुकिंग एट दिस चार्ट, this is an 85 week cycle, a low formed here and a rally, low formed here and a rally, low and a rally here. Very clearly are we seeing this? Are you able to make out all of those things? In fact, the low formed here March 2020 was a rally. यहाँ inversion है, this is inversion. Inversion का मतलब होता है जहां लो बना था वहां पर टॉप बना, this is known as inversion. That's inversion I am talking about, जो यहां पर हुआ है। This is 85 week time cycle on Nifty. Is it clear? 85 week time cycle on Nifty पे हमने प्लॉट किया यहाँ पर एंड देखा है कि मार्केट में क्या हो सकता है। 85 week, सोचो कोविड का फॉल गॉट अरेस्टेड हियर जस्ट on the 85 week time cycle. Isn't that super? यहां पर कोई सोच सकता है हर एक फॉर राइज 85 वीक्स, यहाँ पे 85 वीक लो और रैली, लुक एट दिस, वाओ दैट इज टाइम। दिस इज बैंक निफ्टी 89 पीरियड पे 15 मिनट चार्ट पे बैंक निफ्टी का चार्ट है। लुक एट दिस बैंक निफ्टी चार्ट, इजंट दैट सुपर, वेर यू आर एबल टू सी दैट ओवरऑल हाउ इज बैंक निफ्टी ऑन अ 15 मिनट्स। मतलब आप बैंक निफ्टी के 15 मिनट चार्ट पे ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कभी बैंक निफ्टी में आने वाले वीक में लो बनने वाला है। डू यू वांट टू नो व्हेन इज द नेक्स्ट लो ऑन बैंक निफ्टी इन अ 15 मिनट चार्ट? लो कब बनेगा? द नेक्स्ट लो ऑन बैंक निफ्टी इज गोइंग टू बी ऑन 10th of August at around 9:30। 10th अगस्त कौन सा डे है? 10th of August, लेकिन आई थिंक इसमें हॉलीडे टेक केयर नहीं हुआ होगा, so we will have to check that 10th of August 9:30 को, वेडनेसडे को, we'll have to check वेडनेसडे at 9:30 को बैंक निफ्टी में लो बनने की पॉसिबिलिटी है। इज इट क्लियर? वेडनेसडे 9:30 पे। और हमारा वेडनेसडे कौन सा डे था निफ्टी पे? बुलिश की बेरिश? गाइस वेडनेसडे कौन सा डे था निफ्टी पे? अभी हमने डिराइव किया था वेव थियरी के बेसिस पे। आर यू हियर विथ मी? वेडनेसडे को फुल मून नहीं है, फुल मून थर्सडे फ्राइडे से है। वेडनेसडे को हमने अभी डिराइव किया था, डू यू रिमेंबर दैट? और भूल गए इतना जल्दी? वेडनेसडे विल बी बुलिश, तो कैन आई से 10 दिस इज वेडनेसडे व्हिच इज 10th of August, 10th of August 9:30, 10th of August 9:30 को if we get a bullish candle, can I say I can look for buying opportunity in bank nifty? है ना? सो बैंक निफ्टी का मूवमेंट हो सकता है यहां से नीचे आए, थोड़ा पुल बैक दे, फिर नीचे आए, वी माइट सी एंड देन वी माइट गेट अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। सो वेडनेसडे
9:30, sorry, I'm so sorry, not 10:30, 9:30, which is Wednesday, is a bullish day. So we will be looking for a buying opportunity on Bank Nifty. है ना, fantastic. आज तक सोचा था क्या कि टाइम के बेसिस पे हम ये सब चीजें कर पाएंगे? Do you want, so I call these people as time traders, you know, time traders. यहाँ पर मैं जो दिखा रहा था आपको ओवरऑल चार्ट, नीचे आके ऊपर, देन वी माइट स्टार्ट सीइंग द ओवरऑल. सो मैं स्क्रीन शेयर करना भूल गया था. दिस इज हाउ वी कैन पॉसिबली सी बैंक निफ्टी, एंड दैट्स व्हाट इट विल हैपन. सो वेडनेसडे 9:30 को ध्यान रखना है हमें. एवरीवन, लेट मी गो बैक टू माय पीपीटी अगेन नाउ. लेट्स जस्ट मूव फॉरवर्ड. Clearly, everyone is able to see this is an 89 period. This is 45 period. Red wala 45. ITC पे. This is 45 period cycle on Bank Nifty ITC. This is ITC chart. सोचो ITC पे हर 55 दिन में एक लो बनता है. Every 55 days ITC forms a low. Wow. So अगर आपको ITC में SIP करना है ना, तो you have to do it every 55 days. प्रशांत जानदारी सिंह, योर एमओसी वाज ऑसम, थैंक यू वेरी मच. चलते हैं आगे. क्रूड ऑयल. क्रूड ऑयल पे हर 115 दिन में लो बनता है. इनफैक्ट यहां से बाउंस बैक, यहां से बाउंस बैक, यहां से बाउंस बैक, यहां से बाउंस बैक. यहां पर रशिया यूक्रेन वॉर आया था एंड यहां से बाउंस बैक. क्रूड ऑयल का 115 दिन का साइकिल ऑलरेडी आ रहा है. तो मतलब अगर यहाँ पे बुलिश कैंडल क्रूड ऑयल पे बनी, वी विल अगेन स्टार्ट सीइंग rise in crude prices again after few days of time, and inflation will again increase. क्रूड ऑयल है. सोचो रशिया यूक्रेन वॉर को भी प्रेडिक्ट किया क्रूड ऑयल के साइकिल ने, है ना. दिस इज गैन. सो विल बी डिस्कसिंग, अभी तो टाइम नहीं है. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट लूनार साइकिल. वी हैव टाटा मोटर्स का वॉल्यूम प्रोफाइल. वाओ, यहां पर बड़े प्लेयर्स ने टाटा मोटर्स का volume profile. Yes, each stock will have their time cycle. You can apply it on stocks, you can apply it on anything. You can apply it, this concept you can apply it on commodity, currency, 5-minute chart, 15-minute chart, everywhere. बुक में सब चीज कवर्ड नहीं है. सो टाटा मोटर्स में बड़े प्लेयर्स ने 430 के लेवल पे एक्यूमुलेशन किया है. तो अगर टाटा मोटर्स पे यहाँ पे डिप मिलता है, there is possibility of it going back up. How to know these time cycles and everything, we will do that in Master of Waves session, Sushant. So guys, this is Sensex prediction that we talked about very clearly. हमने देखा सेंसेक्स को, देखा लूनार को, देखा कैसे टाइम को देखा, और सब चीज फॉलो की. बैंक निफ्टी. So what all things did we look at? सोचो ये 2 घंटे भी पूरे नहीं हुए, हमने क्या क्या देख लिया. कैंडलस्टिक, लूनार साइकिल, वॉल्यूम प्रोफाइल, ओपन इंटरेस्ट प्रोफाइल, हमने टाइम साइकिल देखा, एलियट वेव देखा, 15 मिनट 5 मिनट्स पे देखा. आर यू नॉट एक्साइटेड? सोचो अगर 2 घंटे में इतना कुछ सीख सकते हैं, आर यू नॉट एक्साइटेड टू बी विथ मी फॉर द ऑप्शन ट्रेडिंग प्रोग्राम एंड मास्टर ऑफ वेव? डू यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट प्रोग्राम? रिलायंस पे यू कैन सी दिस. डू यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट वंडरफुल जर्नी which will be a life transformation journey for you all? I'm telling you. So देखिए यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, ये बहुत टाइम से यूज कर रहा हूं मैं. ये दिस इज 2015 का चार्ट. वहां पर भी सेम था. यहां से नीचे आएगा निफ्टी, बाउंस बैक होगा, नीचे आएगा. दैट इज हाउ निफ्टी शुड बी, बेस्ड ऑन टाइम एंड वेव पैटर्न. दोनों चीजें हैं. हुआ क्या? एग्जैक्टली वैसे ही हुआ. देखो 2015 का चार्ट है. सो आई हैव यूज्ड डिफरेंट चार्ट. दिस वर्क्स यार. It is working. So only you and you alone can change your situation. Don't blame it on anything or anyone else. This is very important. कि यार अगर कुछ करना है तो आप यहाँ पर हो आज, इसका मतलब ही you want to change your way of trading. You being here, that represents it. That you want to take that step forward. You want to make a difference in your life. You don't really want to be in that rat race. And this is possible. Okay, and clearly, so here we can clearly see this is Lieutenant Commander Prashant Mandake from mentorship batch, and he has mentioned all the trade are as per hourly candle theory.
recovered more than double the fees of mentorship even before it started, because जो हमने video access दिया, जो bonus videos दिए, and all of those things, he used that to trade and he made something big out of it. Look at that entire, on each of these trade, how much he is making by trading the option. So this is from Anand. Just wanted to share that today is my first trade to hit century in intraday, 100,000, which means 1 lakh in intraday. Usne trade kiya. And based on the techniques that we discussed, glad to be a part of this program that he attended, the mentorship one. He's talking about that. Here it is from clearly time trading works and traders can be made. This is the best example from Tuin Mohinta. He's here also. He's from the batch. And from day one, he applied time cycle along with the Gann level and hourly candle size and all of those things. So those are the details that we can clearly see. Sure, Sangmesh, my colleague, will share the details with you, how to be a part of this wonderful program. So just share it here along with that. So Suresh, Devyani International Trading Stocks booked super, right? From various places, you can clearly see here all of those things. So these are the mentees. This guy is doing fantastic. He has been a part of BMW program, MOW he attended last time, and he has been scalping. And he's currently in Bali. I saw the tweet. He tagged me that I'm in Bali and trading. That's fantastic, right? You can trade anywhere you are. So this is what I call as fearless traders. मतलब आप घूम रहे हो लेकिन ट्रेड भी कर रहे हो. मतलब you are not worried. Fearless trading is what I call it. Okay, very clearly, every one of you, everyone, समझ में आ रहा है कैसे ये ट्रेड करते हैं? So चलते हैं आगे. Let me move forward now. Now, this is basis of TCS. He has been trading and all of those techniques that we have learned. My first earnings based on search teaching trend following, heads off. Okay, clearly over here you can see that entered on 1 hour candle, looking at this technique that we are discussing currently, plus साथ में जो थोड़ी techniques we are looking at it. Okay, now over here I've been talking about Tata Motors. See, this is the tweet I made, that despite of the bearish result, Tata Motors will go up. 427 का 425 का सपोर्ट था. So यहाँ पर टाटा मोटर्स ने 427 पे लो बनाया and fantastic, it just went up, amazing, clearly. चलिए, so let me now talk about the BMW program, the Become Market Wizard program, and we will be clearly seeing this over here. What is this about? The program is going to cover option trading using technical analysis. देखिए BMW इसलिए बोल रहे, BMW सबको चाहिए, right? So not only BMW, this is market, you know how much you can make, but understand the risk, important है. So 21st August को option trading program है, and then Master of Ways is happening on 17th and 18th of September. Okay, you can be a part of this wonderful journey. Here is the detailed structure about it, about BMW program. I am going to be talking about very clearly in option trading program में हम साथ में करेंगे. See, the overall thing is यहाँ पर हम we will look at the payoff chart. I am going to give you 5 trade setups for options. You option buying and selling both. For options आप कैसे 5 trade setups clearly use कर सकते हो. We will be looking at open interest profile. Okay, we will be looking at open interest profile के साथ में volume profile, what are big players doing. We will combine these things together, plus we will look at Ichimoku cloud also on this. बहुत ही amazing technique है. Candlestick के साथ में, of course candlestick के बिना तो ये हो ही नहीं सकता. So candlestick technique दे trade करेंगे, हम देखेंगे. The pricing for option trading program is only 19,500 plus GST. I'm telling you, this pricing is valid for today because you all are giving your time to me. आप यहाँ जा आए हो, उनके लिए है 19,500 plus GST. The early bird is
over, और उसमें भी ये ऑफर नहीं है. You can go and check my website. You will not find this pricing anywhere. It's only for today. The link for registering is shared across. So let me also explain कि BMW क्या है. Let me just come back here. So Independence Day offer में भी ये नहीं मिलेगा. This is the lowest rock bottom price. I'm telling you 19,500 के नीचे आपको ये कहीं पे कोर्स मिलेगा ही नहीं. और for OTTA. If you are a part of Master of Waves, and this is valid only for today, और साथ में I'm also going to give you, along with this, today itself you will get 3 bonus videos if you are a part of it. Master of Waves is going to cover Elliott wave, जिसकी आपको वीडियो लिंक्स दी जाएगी. Neo wave, these are live sessions. साथ में इसके अच्छा ऑप्शन ट्रेडिंग में भी there will be a pre-session before the session starts. We are going to have a pre-session also, and we will have a follow-up session as well. So don't worry on that. Plus recording भी दी जाएगी आपको इसके साथ में. You will also be having recording for a period of 10 days along with this, and you will be going through that. Then we will have a follow-up session. We will form option strategy, option buy, sell. Expiry day पे क्या करना है आपको trade. How to look at markets on the expiry day. How to trade, we are going to look at expiry day trade setup on Nifty, Bank Nifty. All of those things we are going to do. Master of Waves में Elliott wave है, Neo wave है, plus हर्ष टाइम साइकिल भी कंबाइन होगा. साथ में you will also be getting classic trade setup where you can forecast the market and trade using wave theory, Hurst time cycle clubbed together. This is something no one is doing it in entire Europac or Asia, I'm telling you. And along with this, if you register for BMW is combining all of those things together. We call it as a BMW. The BMW is OTTA, plus you will get Elliott wave, plus Neo wave, all of those things combined together. Along with that, you will also get 10 bonus videos if you are a part of BMW. Along with that, you will also be getting 15 days of research report, which will be showing application of those things. Follow-up session, pre-session, मतलब इतना सारा हम value create कर रहे हैं ना, that you can't even imagine. So ये जो आप bonus videos साथ में अगर आप देखोगे, the bonus videos pricing itself, each video is worth 2,000. So 20K का तो आपका खाली bonus videos हो गया. You know that it is much more than that. You will going to be simply amazed to see. So जो आप देख रहे हो, this pricing is something that is going to be value because I want you to learn. And this is an investment for lifetime. देखिए knowledge है. Market में पैसा loss करके नहीं जाना है हमें. This is investment for lifetime. The pricing of this is 32K plus taxes. So we will have 10 bonus videos in that. That itself is worth 20. Imagine उसके साथ में जो Elliott wave का links दे रहे हैं ना हम आपको, that itself is worth 10K. The research report itself is worth 2 to 3,000. तो आपका value 32 even before the course starts. Your value for option trading and Neo wave is essentially free. Look at it from that perspective. It is simply superb. And mentorship अगर आप हो, mentorship has already started. हमारा day 2 हो चुका है, which will be for 3 months together. We are going to be discussing about everything. So mentee has a part of all of those things. So wave theory is different than option trading. में जो technique है वो अलग है, wave theory अलग है, दोनों अलग concept है. And clubbing that is simply fabulous. So take that step forward, guys, and it is simply amazing. The pricing for mentorship is 120 plus taxes. If you want to be a part of mentorship, I would suggest you can be a part of this wonderful journey of BMW, where will be all of those things combined. The link is shared across by my colleague. You can simply visit there and register yourself. आप सोचो ना कि इतना कुछ जो मैं टेक्निक्स आपको देने वाला हूं, and it can be applied by anyone. ऐसा नहीं है कि मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं. That is what you are thinking. So here is let me just share across the screen very clearly with each one of you. How do you go and register yourself? So that's the screen. आपको यहाँ जाना है. You can pay using net banking, credit card, or any such details, and you can do that. Here is the link for
the offer, which I'm just sharing it across. Be a part of this wonderful journey. It will transform your learning. It will transform you as a trader. That is what I can for sure tell you. So यहाँ पर है, that's the link. I'm sharing the screen across with you all. आपको screen दिख पा रही होगी. And यहाँ पर you can clearly make out the amazing way. What all things you will get. You can simply go, click on pay now and register yourself. कुछ नहीं तो option trading का you have to take that step forward. Once you click on this, you will have to just go here and register yourself for the entire thing. So will I get the recording? Yes, you will be having the recording access. Do not worry if you even miss out, or even if you don't miss out, you will have the recording which you can go through again and again later on for a limited time. And that's how it is. So you can register for BMW, or if you want to go for OTTA or MOW program, those are the things. And as I said, the offer is valid only for today. This pricing you will not get it later on, which is for OTTA, MOW or BMW program. Plus the bonus videos will not happen from tomorrow. That is for today, since you are giving your time and questions. So I'm going to take a very quick poll. Which path to become a expert trader or to this financial freedom? See, we always want to create some passive source of income, to be very honest. हमें चाहिए कि यार जॉब के साथ एक एडिशनल इनकम हो जाए, या हम जॉब क्विट करना चाहते हैं लेकिन सपोर्ट नहीं है. See, I have lost my job. I know the pain. I know how it works. I've authored a book, as I said, and this is an investment in knowledge. अगर मैंने 2008 में लीमन जब बैंकरप्ट हुआ, मैंने वो टाइम पे CMT नहीं किया होता तो आज मैं यहाँ नहीं होता. So what I'm trying to tell you, because I invested into knowledge, it's going to be with me for lifetime. Don't you want that? कि something so phenomenal is with you. How you can forecast the market, how you can trade options, how can option be a multi-bagger trade. You know, क्योंकि हम multi-bagger trade लेते हैं तो option को multi-bagger trade कैसे बनाना है, क्या trade setup होगा. तो step by step exact trade setup is what we are going to discuss. I also own a resort, Cloud9 Hills Resort, by the way, people who might not know me. So I own that resort, and lockdown में वो resort बंद था 6-8 महीना, but I was staying there with my family, enjoying, because I knew the markets. And I have really taught more than 10,000 participants over more than a decade now. That's because I'm really passionate about this, and I want you to do that. So commodity trading के लिए भी ये use कर सकते हैं. We will use charts from commodities. I've shown you copper chart. I've shown you crude oil. I've done that. So Surekha Patil has a point. Yes, absolutely. So you can do that. Okay, just a second. I was just looking at. So you don't really need any software, to be honest. Go charting अगर आपको यूज कर रहे हैं तो आप कर सकते हो. उसके ऊपर भी आपको 20% ऑफ मिल जाएगा, एंड उसके साथ में उसका कॉस्ट बहुत कम है अगर आपको यूज करना है तो. नहीं तो जरूरत नहीं है. मैं आपको बताऊंगा कैसे बिना कोई सॉफ्टवेयर के, जो फ्री में अवेलेबल है, यू कैन डू इट यूजिंग दैट. यू डोंट रिक्वायर एनी अदर थिंग्स. इज इट क्लियर? You, if you have zero knowledge about options, will it be able to attend? Yes, of course, Jayesh. क्योंकि मैं आपको प्री सेशन लूंगा. I'm going to give you certain videos, and even if you don't have any knowledge, before the session starts, you will be learning a lot of those things already. So you don't really have to worry whether you have that knowledge or you don't have that knowledge. You will not be, you don't really have to worry about it at all. Okay, so don't worry about that. The Faisal is saying this is an amazing program. As a mentee, I don't want to miss any webinar. It's worth joining. I am enjoying trading now. Thank you, Faisal Babu. Thanks for vouching for it. So great to know that, and it's really pleasure. Satya is saying I've joined the BMW program 2 days back, and no problem. You will get the bonus videos. So we don't give all at once. We release it step by step. जिससे क्या होगा मालूम है कि आप ओवरवेल्म ना होगा. तो अगर आपका वो 5 बोनस वीडियोस खत्म हो गया, then the other 5 will be open to you. Don't worry on that. Absolutely do not bother.
That's my commitment. Okay, will Master of Waves cover time cycle? Yes, time cycle will be a part of it, uh, where we are going to look at Weber. It will be a part of it. Okay, so that is going to be there clearly. And okay, there are so many questions. I'm just trying to figure out which one to answer. Uh, Praful is saying after a long time I am able to join live. Absolutely, Praful. Great to get you on board. Fantastic over here. And there is a question, sir. I am a student. I want to join the BMW program. Can I do that? Yes, of course you can do that. You actually you will not believe. ये आपको जॉब प्लेसमेंट में जो हेल्प करेगा ना, योर एंटायर अंडरस्टैंडिंग अबाउट मार्केट विल बी एट अ डिफरेंट लेवल. You can't even imagine. Okay, I am trading. Madhavan is saying I am trading intraday. So what should I do? So Madhavan, see, अगर आप इंट्राडे भी ट्रेड कर रहे हैं तो हम जो टेक्निक्स है टाइम साइकिल की, वेव थियरी की, वी विल अप्लाई इट ऑन 5 minute chart, 15 minute chart. So you can apply that on 15 and trade intraday for, of course. So you don't really have to worry about it. In this BMW program, it is for everyone who wants to, trade the market successfully. And it's about probability. 100% अगर किसी ने बोला होगा ना शॉर्ट शॉर्ट तो वो फेक कर रहा है, देयर इज नो 100%. दिस इज ऑल प्रोबेबिलिटी. आई एम वेरी ऑनेस्ट विथ यू ऑल. अगर आपके साथ में 70% 80% एक्यूरेसी भी है, यू कैन मेक मनी. ओके, Deepak, can we ask questions during the session? Yes, of course. Because asked, there are thousands of participants, so I can't really answer to each one of you. But we will do that. So there will be a follow-up Q&A session where होने के बाद भी आप पूछ सकते हो. Even during for learning. So problem क्या होता है कि सेशन में 2 दिन सीख लिया, अभी अप्लाई कर रहे वो सही कर रहे कि नहीं, that's the question, right? So you will be able to post it on our traders forum. I will give you the path. How do you post your chart? You can raise your questions there, and I'll be answering all of those things there. Okay, I can see Navin Babu is here and he's saying, sir, I have already registered for the BMW program right now. So can I get all the details and the link bonus videos? Yes, of course. So don't worry. Just give me 5 minutes. My team will set you up, Navin. Great to get you on board. You don't really have to worry about it. They will set you up. You will get. So I'm just repeating what all things you will get. These are online sessions. You will get right now today. You will get access to Elliott Wave video links of 6 hours, which is going to be with you for 1 month. You will get access to the 15 days of research report. You will get access to the 10 bonus videos, all of those things today. You will be getting access to the most important part of how you have to trade by exclusive access to certain videos in options. So you are going to get all of those things. And okay, after the expire of sessions, can I post your queries and doubts? Yes, of course, it does not matter. I'm always here. आपने देखा होगा, I'm conducting this webinar for all of you here. I don't really have to do that, right? See, इतना knowledge I'm giving it to you. कहीं पे देखा इतना कुछ देते. Where the question over here is, okay, the question is, can I only register for Master of Waves session? Yes, of course, you can do that. That's why we have different programs. You can register only for Master of Waves also. So that is not a problem. You can do that. You can just go and register for yourself. But options के साथ मैं इसलिए बोल रहा हूँ because जो भी strategy हम option में form करेंगे, strangle है, कब करना है, straddle कब करना है, simple है. Direct option chart को Greeks पे complicate नहीं करेंगे. Simple option chart को देख के कैसे trade लेना है, वो हम देखेंगे. Can I buy video lecture? You register for this webinar. In case you don't attend it, you will get access to the videos, of course. If my option buying possible intraday with small capital? Yes, why not? क्योंकि option buy के लिए आपको capital ज़्यादा नहीं चाहिए, ललित. You can simply do it with small capital also. So there will be certain techniques that we will discuss about how to do those option buying, how to trade those expiry days. So that techniques are going to be discussed. So you don't really have to worry about it. Is it clear? Okay, I can see Nidhi is registered for the BMW program. Really excited to be a part of it. She is saying, excited. You are thrilled. Your transformation will happen as a trader. I'm telling you, Nidhi, जो आपने step लिया है. Great to see you over here already.
I can see Madhav has already registered for OTTA. Fantastic. So many of you have been a part of this. That's really great. There are so many chats coming up. So let me now very, very quickly just go back to the PPT and conclude whatever is pending. So the mentorship is going to cover everything in case you are a part of mentorship program. I'm ending the poll, by the way, and over here, and just a second, and you can clearly see what people have to say. So we can see what Hussein has talked about. Vikash has said that it has been an eye-opening. Really grateful to AK sir for sharing his experience with us, making it so simple and systematic. Conceptual clarity for an option buying and selling, how to grow as a trader. Need to practice what he has taught in a couple of days, right? That is very important. So Ashish Kyal is a knowledgeable guy. Explain neo-wave with simple logic are really good for learning advanced concepts of wave theory. Thank you for that, Priyam Das. And planning process steps before taking a trade, which I was not aware of earlier. Thanks for changing the way the market has to be approached. Shailesh Railkar. Great. So can we get consistency? Yes, see, consistency may you have to understand very clearly. Consistency does not mean कि हर बार आप पैसा बनाओगे. Consistency means at the end of the month, are you profitable or not? At the end of the year, are you profitable or not? So उसके साथ डिसिप्लिन वे से अगर आप ट्रेड सेटअप जो हम डिस्कस करेंगे आप करोगे तो वो पॉसिबल है. सुहास, does it answer your question, Suhas? Okay. So Atul Joshi is asking, yes, the video will be available to you. Don't worry on that. Don't forget, it will be with you, and just keep the learning going. That is important. Okay. For a very clear, that is my mandate. People should learn. So guys, very clearly a disclaimer again. We are SEBI registered research analyst mentioned here. The stocks and everything we discussed. This is the disclosure. We are not having holdings there. And this is the number 9920422202. That's the number that you can save. If you have any queries, doubts, you can reach out to us. What I want you to do is I want you to deal with your problems by becoming rich. Okay, that's like a wonderful saying, and it's very true. पहले पैसा कमाए तो सही. लोग बोलते हैं क्या करेंगे पैसा कमा के. अरे जिनके पास बहुत है वो ऐसा ही बोलते हैं. Let us at least make a lot of money, then we will see what we want to do or not do. At least we have that luxury, of traveling and trading. I really love traveling and I love trading. That's both of those things are my passion, and you can do that. That is possible. So become a wonderful trader. Those are the coordinates. You can follow us on various channels. So ensure, guys, you are a part of this program. So many questions. I'm sorry if I was not able to answer all of those. Just take that step forward towards the better tomorrow. This is an investment, not like watching a movie ticket dekha or bhul gaye. This knowledge stays with you for lifetime. Whether you want to quit your job, you want to do it full time, or you want to generate passive source of income parallelly along with your job. All of those things. Right now it is 1:15 and we are bang on time. Fantastic, guys. Thank you very much. I hope this is going to happen. Offline session nahi hoga, online hai. This is not going to happen offline because I want people across the globe to learn, because there are people joining from US, joining from Singapore. They are also going to be here. And also along with that, remember one thing very clearly, the interaction that we can have online has now taken over, and this is going to be the norm. And the next session, koi puch raha tha ki next session kab hoga? It might not happen before 5-6 months, to be very honest. So if you want to take that step, take it now. And as I said, you will get all of those things which is going to be valid, including the bonus videos, the discounted price. The actual price, if you look at is BMW is 98,000. We are giving it 32K. Can you imagine that? The 19, which is 49K, OTTA ka pricing 49,000 is given at 19,500. It is like 70% off here on this entire program that you are in, 60-70% off. And BMW ka agar aap dekhoge, combined cost, all of those with bonus and everything goes in lakhs, but we are giving in 32K because you gave your valuable time. So take that step forward. Great, guys. Thank you very much for your time.
Have a wonderful day. I love talking to you all. And this is Ashish Kyal signing off now. And see you for this program. Great to get you on board. I think so many of you are there. The few names which I remember clearly is Nidhi is here, Webo is here, who has been onboarded. I can remember Atul has onboarded. So a lot of you, I mean, there are many who have onboarded. I remember a few names. Sorry for that. And you will get the access immediately right now. So great to get you over here. So overnight risk क्या है, gap को कैसे manage करना है, stop loss कैसे manage करना है, all of those things we are going to do that clearly. So don't worry on that, and have a wonderful day, guys. Thank you very much for giving your time on a Sunday. Ashish Kyal signing off.